We request everyone to kindly settle down fast. Please put on your mask in accordance to COVID-19 protocols. You can't believe I could just leave it wrong, and you can't make it right. I'm gonna take off ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਆ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਭਰੇ ਆ ਡੱਬੀ ਹਥਿਆਰ ਟੰਗੇ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਨੱਕ ਜੜੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਆ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਭਰੇ ਆ ਡੱਬੀ ਹਥਿਆਰ ਟੰਗੇ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਨੱਕ ਜੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਪੁੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੱਟੀ ਬੋਝਦੀ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਠੁੱਟੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਡੀਆਂ ਖੁੱਬੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਚੁਬੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਤਰਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਆ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਭਰੇ ਆ ਡੱਬੀ ਹਥਿਆਰ ਟੰਗੇ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਨੱਕ ਜੜੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਆ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਭਰੇ ਆ ਡੱਬੀ ਹਥਿਆਰ ਟੰਗੇ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਨੱਕ ਜੜੇ ਆ ਨੀਮ ਦੀ ਡੱਬੀ ਕੋਲੇ ਦਬ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਕਰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੌਲੇ ਬੰਦੀਏ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਪੇਸ ਕਰੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਅਰਜੂ ਮੂਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਢੱਲੋਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਆ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਭਰੇ ਆ ਡੱਬੀ ਹਥਿਆਰ ਟੰਗੇ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਨੱਕ ਜੜੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਆ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਭਰੇ ਆ ਡੱਬੀ ਹਥਿਆਰ ਟੰਗੇ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਨੱਕ ਜੜੇ ਆ Money so piling, my flight is so confident, straight to the island, my bros, he said, wait, it's all about time, I had time for the time, it was confident, still bringing it. We request everyone to maintain social distancing and please leave one chair in between. That's why I am the way that I am. I was a kid and I turned man. You can get rich if you can't take a chance. I took a We request everyone to please maintain social distancing in accordance with COVID-19 protocols and please leave one chair in between. We request you all to be seated and wear your masks in accordance with COVID-19 protocol. We request you all to kindly be seated. In accordance with COVID-19 protocol, we request everyone to kindly sit and leave one chair in between. We request everyone to kindly maintain social distancing in accordance with COVID-19 protocol. अरे हो गया नहीं रिमबर्स कराना है कॉलेज देगा हम लोग क्यों दे कितना लगा कितना लगा अरे बोल ना हम आप सभी से अनुरोध करेंगे कि कोविड को ध्यान में रखते हुए आप अपने बीच की एक कुर्सी छोड़कर बैठे. Kindly rise as our dignitaries arrive. Kindly be seated.
Zest is what defines youth. The young have dreams in their eyes. They believe in reaching for the stars, and for them, sky is the limit. Good morning, Adab, Namaskar, Sat Sri Akal. On the behalf of St. Xavier's College of Management and Technology, Patna, I, Sanghamitra Rajay Singh, and I, Vikas Singh of BMC2, welcome you all to the most awaited youth festival of 2022, Xavier Youth Fest. On every auspicious occasion, we have a tradition of lamp lighting ceremony. And for the same, we request our chief guest, Ms. Mary Alfonza, our acting rector and vice principal, Father Dr. Martin Porras SJ, our principal, Father Dr. T. Nishant SJ, Mr. Joel De Cruz, Dean Activities, and Ms. Sabila Rashid, Chair Zest, to kindly come on the stage. Also, I request our controller of examination and the guide of Zest, Father Dr. A. Sebastian SJ, to bring the holy lamp from the Sarva Dharma Samabhav Prathnale, which is the sanctum sanctorum of our college. In this holy Garbhagri, we have placed different scriptures like the Holy Bible, the Bhagavad Gita, the Guru Granth Sahib, and the Holy Quran. All the dignitaries to kindly stay on the stage for the formal inauguration of Zest. Thank you, everyone. Our chief guest of the day, Ms. Maria Alfonza, is the principal of Don Bosco Academy. Ma'am, you are the convener of CISCE. You have been instrumental in guiding and mentoring young lives towards their destiny. Your focus and commitment were always towards the students' growth and confidence. As we all know, that there is no
function complete without a prayer dance. God connects us. We are connected with God through prayer dance. So let's welcome Xavier Dance Club with a prayer dance. जिसने रचा ये संसार, जिसने रचा ये संसार, हर पल उसका करो अभिनंदन। जिसने रचा ये संसार, हर पल उसका करो अभिनंदन। उसको नमन करूं मैं, उसका भजन करूं मैं। उसको नमन करूं मैं, उसका भजन करूं मैं। जिसने रचा ये संसार, वो सबका जिसने रचा ये संसार, वो सबका आधार। Thank you, everyone. Ma'am, it's our pleasure and honor to have you amongst us, not only as our chief guest, but also as an inspiration to all our students. May we request our principal to kindly come on the stage and formally welcome our guests and participants. Before that, we request everyone to kindly rise for our college anthem.
sail away like candles flowing night and day. Send saviors, you challenge us to be the change we want to see in the world around, to stand strong every day with hope in our ground. Send saviors, send saviors, send saviors. May we request our principal to kindly come on the stage and formally welcome our guests and participants. Good morning and namaste, ladies and gentlemen. No good morning, nothing. Good morning, sir. We are here for zest. Have you got zest? No. Zest means energy, life, full of enthusiasm. Good. Respected chief guest, Miss Mary Alphonse, the principal of Don Bosco Academy, Father Martin Porras S.J., the acting director and vice principal, members of the management, committed staff, participants from various colleges and +2 schools, and our beloved students. It's a matter of great pride and joy that we have succeeded in organizing XEST 2022 in spite of all kinds of adversities like the third wave of COVID-19. I would like to congratulate the XEST committee, its guide, Father Dr. A. Sebastian S.J., the Dean of Activities, Father Mr. Joel De Cruz, its members, Samarayas, Mario Martin, Ms. Rekha Kumari, Mr. Vikas Benjamin, Mr. Sahash Bhushan, and its chair, Ms. Sabila Rashid, who left no stones unturned. May I have your silence over there? Students, hello. Students who are at the back, please keep quiet. I'm sorry. Ms. Sabila Rashid, the chair, who left no stones unturned to exhibit her organizational skills, synergy in teaming up with her colleagues and planning it meticulously. She's standing over there. Yeah. Let's give her a hand. Yeah. Xavier Youth Festival, Youth Fest, ZEST. ZEST means zest, Josh. There's a film, no? Josh hai na? Koi Josh nahi hai, baap re. To add zest to add joy to the opening ceremony of XEST 2022, we have with us a very noble person in Miss Mary Alfonsa, the principal of Don Bosco Academy, who is our neighbor. It is a matter of gratitude and joy to mention that this school has entered into its Golden Jubilee celebrations. Miss Mary Alfonsa, we would like you to convey our deep appreciation and gratitude to Mr. Alfie Rosario, Miss Dorothy Rosario, and their sons, Tony and Eric, for the ways you have supported not only our college, but many other institutions and individuals in Patna, in Bihar. We have here your students, and I think you met 3 of them there, of this batch here. And I think Mr. Mario Martin, assistant professor in the Department of Business Administration, is your own student. Ms. Mary Alfonsa has been associated with the Don Bosco Academy for more than 4 decades, to be precise, 44 years. And she's a very efficient administrator and a kind soul. We are blessed to have you with us finally, after many requests in the past which went futile. May I request Father Dr. A. Sebastian S.J., the control of examination and the guide of XEST committee, to welcome her warmly with a sapling. Come here, ma'am, please come over here.
Please come. Thank you, ma'am. Thank you, Father. Let's enjoy together, being together. We have students participating from various colleges and plus two schools of Bihar. This is the third time we are together. I'm sure we will have it organized every year. We had to cancel last year's because of COVID-19. This year we organized in January, again got postponed, but we are having it. So let us be full of zest, Josh, but there will be no kash. Kash ya nahi hota, wo nahi hota. We have come together to celebrate life and life to its fullness. So let this be seen in the way we interact with one another, with the love, the respect, and with the cooperation. This is especially for our students and our staff. Those who come from outside, they're coming for probably the first time. They need to experience our warmth and hospitality. So once again, a very warm welcome to each one of you. Khuda Hafiz, Jai Xavier, Jai Bharat. Thank you, Father. तूफानों को चिर के मंजिलों को छिन ले आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे खुल के अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी. Very well said, Vikas. जब मन बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का. Ladies and gentlemen, without taking much time, let's begin the show. संगमित्रा, मेरे जहन में एक बात आई तो सोचा तुमसे कहूं. इरशाद. देर लगेगी पर सब सही होगा. देर हमारे जेस्ट में देर लगी तो देर लगेगी पर सब सही होगा और हमने जो सोचा है आखिर वही होगा. और आखिरकार वही हुआ. XEST 2022 is finally here, ladies and gentlemen. Zest? Zest का मतलब? XEST का मतलब Xavier Youth Fest. मतलब म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट. विकास, इतना भी फिल्मी नहीं होना था. Why not? It's all okay to be filmy sometimes. The most famous lines in Shakespeare's As You Like It, all the world. A stage and all the men and women are merely players. I know. बिल्कुल सही कहा. Coming up, 5 films which were selected for XEST finale. They're all based on students' life. Let me introduce you all to our jury members for the short film. We are happy to have among us Mr. Pranav Pratap Sahi, sir. You are a well-known filmmaker in Patna, trained many in media who are working in news channels and cinema. You have produced many films for Tourism Department, Bihar, UNICEF, Bihar Educational Project Council, Patna. Sir, you have contributed a lot in media of Bihar. You are a good cinematographer, editor, and a director. Amidst us is Father Sebastian Kanikatil SJ. Father, you were the person who established Regional Audio Visual Institute, Patna, in 1977. You can speak many languages like Filipino, Italian, French, English, Malayalam, and many more. Many years you were in New Delhi as Nunkio's secretary. You have contributed many times to AIR, Patna, trained many persons in field of radio and sound recording technology. Professor Dr. Anuradha Sen, an alumna of Sri Venkateshwar College, Jesus and Mary College and Lady Shri Ram College, New Delhi.
She has been teaching since 1996 and has published her research papers in journals of national and international repute. Her areas of interest include cinema, feminism, eco-criticism, and film criticism. May we request Professor Frank Krishna, Head Department of Journalism and Mass Communication, to kindly felicitate our judges for short film competition. Sir. Thank you, sir. Thank you, sir, for doing the honor. Thank you, judges. So let's have our first film from the short film competition, SF002. We request all seated here to please maintain silence.
This was SF003. अच्छा एक चीज पूछना था यहाँ पे. How many of you are singers here? How many of you are singers here? Please raise your hand. Okay, so I'll sing and you'll have to sing after me. Okay? You'll have to sing along me. कुछ पाने की हो आस आस, जब करना हो कुछ खास खास, हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को आर पार, तूफानों को चिर के मंजिलों को छीन ले. Come on. आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे खुल के, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी. इसका फर्स्ट स्टैंजा. उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ. तो उम्मीद है कि आपकी आज की हर दुआ पूरी हो. और इसी के साथ we over to Sangamitra. may we have our next film, SF003. SF002. The first one was SF002, now we have SF003.
Thank you. Let's welcome film SF005. My day is simple. Wake up, eat, work, sleep. Wake up, eat, work, sleep. I am robotic in nature, staying on the systematic path of doing what I need to survive. However, this routine kills me. But now it's time. Je te laisserai tes mots en dessous de ta porte, en dessous de la mur qui chante, tout près de la place où tes pieds passent, cachés dans les trous dans ton divan. Et quand tu es seul pendant un instant, embrasse-moi. Quand tu voudras, embrasse-moi. Quand tu voudras, embrasse-moi. What I need to do is run off the sculpted path, I desire to save new memory, find hidden crevices, to endure the art, to meet new people, to explore the unexplored, to love, to care. to trek in the scorching sun. My days are simple. Wake up, eat, sleep, repeat. But now I dream. Because someday, this evening will just be memory. Thank you. लेकिन मानना पड़ेगा विकास, हमारी जेवियर यूथ में टैलेंट बहुत है. बिल्कुल. So now let's welcome SF007 with their film.
Thank you. And just to mention, there were 10 films in the screening and 5 were shortlisted to display it here. And यार पता है हम लोग कोविड से क्यों जीत जाते हैं और कोविड क्यों हार जाता है? बिकॉज एक करेज होता है और दूसरी होते हैं और प्रिकॉशंस, ठीक है? तो उन उन करेज और प्रिकॉशंस के चलते द रेस्ट इज फाइनली हैपनिंग एंड आई अगेन रिक्वेस्ट टू यू ऑल टू प्लीज वेयर अ मास्क इन अकॉर्डेंस विद कोविड-19 प्रोटोकॉल, क्योंकि हमें मोटिवेटेड भी रहना है, प्रिकॉशंस भी लेते रहने हैं. So that was film SF007. Now welcome film SF0010. Okay, so this will be the first finalist of our short film competition. There was a technical glitch. We are really sorry for the inconveniences caused. हाँ माँ. हाँ माँ, कल से स्कूल कोचिंग भी चालू है. हाँ माँ, खाना खा लिया था. हाँ माँ, दूध लाने गया था माँ. पढ़ने ही बैठ रहा था माँ अब तो. ठीक है माँ, बाद में बात होगी अब.
अमोल कुमार Thank you, SF0010. Thank you, everyone. Vikas, suppose you're driving और तुम्हारे सामने दो लोग आ जाएं। Okay. पहले किसको मारोगे? Okay. 2, 3, 4. दूसरे को. अरे यार, नंबर नहीं, तुम पहले ब्रेक मारोगे ना। अरे यार, तुमसे कितनी बार कहा है कि सवाल जवाब ये क्विज विज मेरे से मत पूछा करो, ये मेरे बस की बात नहीं है। Okay, all right. Then please welcome the quiz masters, Riddhi and Preeti, to conduct the quiz competition. The quiz will be based on Indian independence. We request you all to rise as our chief guest leaves. Kindly be seated. We will begin with the quiz now. Hello everyone, I am Preeti and I Riddhi are your quiz masters for the XEST quiz finale. Unleash the genius in you. But we are forgetting something, Preeti. What is it, Riddhi? The people without whom this quiz cannot go ahead. Okay, the participants of our quiz. Yes, you guessed it right, Preeti. So why don't you introduce our teams? So why don't you introduce our teams to the audience who finally made it to the finale? Sure. So we have Team A, Team B, Team C, Team D and Team E. The topic of the quiz is Indian freedom struggle. The quiz shall have 3 rounds in total, and at the end, if there's a tie, we'll have a tiebreaker round as well. So let's start the quiz with the rules of round 1. Each team will face 3 questions. 10 points will be given for every correct answer. Time allotted is 30 seconds for each question. There is no negative marking in this round. If a team is not able to give the correct answer within the time, and then the question will be passed to the another team and they will get 5 points for correct answer. So like we have a try ball in cricket,
To begin with, here is a demo question for the audience as well as the participants. And the question is, वो कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ज्यादा ही कम होती जाती है? Any guesses? Yes, you guessed it right. The answer is age, यानी उम्र. now here is the first question for team A. The question is, Swadeshi movement started in India during option 1, the Champaran Satyagraha of Gandhi, option 2, anti-Bengal partition agitation, option 3, the protest against Rowlatt Act, option 4, the first non-cooperation movement of 1919-22. And your time starts now. The question is, Swadeshi movement started in India. Option 2, anti-Bengal partition. Yes, you answered it right. The answer is anti-Bengal partition agitation. The team A will get 10 marks. Can we have a huge round of applause for team A? Now, my second question is for team B. The question is, the Khilafat movement was started by option 1, Muhammad Ali Jinnah, option 2, Dr. Zakir Hussain, option 3, Fakiruddin Ali Ahmad, and option 4, Ali Brothers. And your time starts now. Option D, Ali brothers. Yes, you answered it right. Wow, our participants are really genius. Now, moving to the next question. This question is for team C. The question is, the roots of the 1857 revolt lay in option 1, bluntly discriminatory policy, option 2, exploitative land revenue policy, option 3, the policy of greased cartridges, and option 4, all of the above. Your time starts now. All of the above. Yes. Oh my God. It's again the correct answer. The team C will get 10 points. Moving to the next question, that is for team D. The question is, Mapila rebellion is associated with which of the following states? Option 1, Bihar. Option 2, Gujarat. Option 3, Punjab. And option 4, Kerala. And your time starts now. The question is, Mapila rebellion is associated with which of the following states? Option 1, Bihar. Option 2, Gujarat. Option 3, Punjab. And option 4, Kerala. Option 1. Oops. Really sorry. This is the wrong answer. The team D will not get plus 10 marks. The correct answer is 4th, that is Kerala. Okay. Now, moving to the next question. This question is for team E. The question is, which of the following was not the outcome of the Jallianwala Bagh massacre? I'm repeating the question. Which of the following was not the outcome of Jallianwala Bagh massacre? Option 1, renunciation of the British titles and position by many Indians. Option 2, change in Gandhiji's attitude towards the British government. Option 3, temporary peace in Punjab. And option 4, suspension of General Dyer from service. Your time starts now. Option 1, renunciation of British titles and positions by many Indians. Option 2, change in Gandhiji's attitude towards the British government. And option 3, temporary peace in Punjab. Option 4, suspension of General Dyer from service. Option C. Yes. This is the right answer. Team E will get plus 10 marks.
Before we will move ahead, I would like to request the participants to speak by putting off their masks. Okay? Now we have the sixth question for Team A. Which of the following movements immediately followed the partition of Bengal? Option 1, non-cooperation movement. Option 2, Swadeshi movement. Option 3, civil disobedience movement. Option 4, Gadar movement. Swadeshi movement. Yes, you have given the right answer. The correct answer is option 2, Swadeshi movement. Now this is the next question for Team B. The Rowlatt Act was passed in the year option 1, 1917, option 2, 1919, option 3, 1921, option 4, 1923. And your time starts now. Option B, 1919. Yes, you have given the correct answer. Option 4, 1919. Next question for Team C. With reference to the Indian freedom struggle, which one of the following is the correct chronological order of the given events? Option 1, Partition of Bengal, Lucknow Pact, Surat Split of Congress. Option 2, Partition of Bengal, Surat Split of Congress, Lucknow Pact. Option 3, Lucknow Pact, Partition of Bengal, Surat Split of Congress. And last option, Surat Split of Congress, Lucknow Pact, and then Partition of Bengal. Yes, and your time has started. Partition of Bengal, Surat split, and Lucknow session of Congress. Yes, you have given the right answer. It's option 2, Partition of Bengal, Surat Split, and Lucknow Pact. Now, next question for Team D. In which session did the Indian National Congress declare Purna Swaraj or complete independence to be its goal? And options are Lahore 1929, option 2 Lucknow 1916, option 3 Tripura 1939, option 4 Lahore 1940. And your time starts now. Option A, Lahore, 1929. Yes, you have given the correct answer. It's option 1 Lahore 1929. Now the last question for Team E. Who among the following Europeans were the last to come to pre-independent India as traders? Option 1 Portuguese, option 2 Dutch, option 3 English, and option 4 French. And your time has started. Portuguese, Dutch, English, or French? Yes, French. Yes, your answer is right. It's option 4, French. So you get 10 points. Guys, it can't be done. Can we have a huge round of applause for our participants? At least we should appreciate them for their hard work, right? So coming to the next question, that is 11 for Team A. Which battle established the supremacy of British rule in India? Option 1, Battle of Plassey, 1757. Option 2, Battle of Buxar, 1764. Option 3, Third Mysore War, 1790-92. Option 4, Fourth Mysore War, 1799. And your time starts now. Battle of Plassey. Yeah, this is the right answer. Now we have next question for Team B. The question is, during which of the following movements Vande Mataram became the theme song of the Indian national movement? Option 1, Non-Cooperation Movement. Option 2, Anti-Rowlatt Act agitation. Option 3, Champaran Satyagraha. And option 4, Swadeshi movement. And your time starts now. Option A, non-cooperation movement. Really sorry to inform you, this is the wrong answer. So, moving to the next question, Team C.
In which of the following years the Vernacular Press Act was passed? Option 1, 1872, option 2, 1875, option 3, 1878, and option 4, 1884. Your time starts now. I am repeating the question. In which of the following years the Vernacular Press Act was passed? Option 1, 1872, option 2, 1875, option 3, 1878, and option 4, 1884. Really sorry, the time has been out. So this question has been passed to team D. And Option C, 1878. yeah, this is the right answer. So team C will get plus 5 points for this question. Now my next question is for team D again. The question is, which of the following leader was not associated with extremist leadership of Indian National Congress? Option 1, Lokmanya Tilak. Option 2, Aurobindo Ghosh. Option 3, Lala Lajpat Rai. Option 4, O. Hume. Option 4, O. Hume. Yes, this is the right answer. Now my next question is for team E. Guys, please put your hands together for all the participants. It can't be done without your appreciation. Now the question is, who was the Prime Minister of Britain when the Quit India movement started? Option 1, Roosevelt. Option 2, Churchill. Option 3, Mountbatten. And option 4, none of the above. Your time starts now. Winston Churchill. Yeah, this is the right answer. Wow, this was a wonderful round. So round 1 is over. Let's move to round 2. And here are the rules for this round. Each team will face 2 questions. 10 points will be given for every correct answer. Time allotted is 20 seconds for each question. There will be -5 negative marking for wrong answer. If one team will not be able to answer the question within the time allotted, then the question will be passed to the another team. Passing question will be carried +5 marks for right answer and -5 marks for wrong answer. So here is the first question of this round for Team A. The Ghadar Party was founded at San Francisco, USA by option 1, Madam Bikaji Kama, option 2, Lal Hardayal, option 3, Shyamji Krishna Verma, option 4, none of these. Option 2, Lala Hardayal. Yes, your answer is right. It's option 2, Lala Hardayal. Now next question for Team B. Who among the following attended all the 3 roundtable conferences? Option 1, Jawaharlal Nehru. Option 2, Sarojini Naidu. Option 3, Bhimrao Ambedkar. Option 4, Dadabhai Naoroji. And your time starts now. Option 4. No, sorry, it's the wrong answer. It's option 3, Bhimrao Ambedkar. So Now- team B will get -5 for this. Now next question for Team C. Which of the following was the main part of Aurobindo's program to achieve independence? Option 1, organization of secret societies. Option 2, passive resistance. Option 3, constitutional agitation. Option 4, terrorism. And your time starts now. Which of the following was the main part of Aurobindo's program to achieve independence? Okay, so Team C has passed the question. Now, Team B, you have to answer this. Which of the following was the main part of Aurobindo's program to achieve independence? Option 1, organization of secret societies. Option 2, passive resistance. Option 3, constitutional agitation. Option 4, terrorism. Option A.
Option A. No, sorry, it's wrong answer. It's option 2, passive resistance. So team D will get minus 5 points. Yes. Now, next question for team D only. The word Swaraj was first used by Dadabhai Nauroji in the Congress session held in and at option 1, 1904 Bombay, option 2, 1906 Calcutta, option 3, 1907 Surat, option 4, 1916 Lucknow. And your time starts now. Option B, 1906 Calcutta session. Yes, you have given the right answer. It's option 2, 1906 Calcutta. Our participants are playing so well. Please, a round of applause for them. Team D will get plus 10 points. Now, next question for team E. Sarojini Naidu was the president of which Congress session? Option 1, 1922 Gaya. Option 2, 1928 Calcutta. Option 3, 1925 Kanpur. Option 4, 1931 Karachi. Your time has started. Option 1, 1922 Gaya. Option 2, 1928 Calcutta. Option 3, 1925 Kanpur. Option 4, 1931 Karachi. Wait. They got an answer. Option C. Yes, your answer is right. It's option C, 1925 Kanpur. Thank you, Team E. Now moving to the next question, that is for Team A. The question is, the partition of Bengal was cancelled in which year? Option 1, 1906. Option 2, 1909. Option 3, 1911. Option 4, 1913. And your time starts now. Option C, 1911. Yeah, this is the right answer. Can we have a huge round of applause for Team A? Now my next question is for Team B. That is, who among the following was the founder of Patna Samaj? Option 1, Debendranath Tagore. Option 2, N.G. Chandravarkar. Option 3, Umesh Chandra Datta. And option 4, Atmaram Pandurang. Your time has started. Option C. No, this is the wrong answer. So Team B will get minus 5 points. The question has been passed to the Team C. I am repeating the question for you. That is, who among the following was the founder of Patna Samaj? Option 1, Debendranath Tagore. Option 2, N.G. Chandravarkar. Option 3, Umesh Chandra Datta. And option 4, Atmaram Pandurang. Option 4. Yeah, this is the right answer. Team B will get plus 5 points. Now my question is for Team B. Team C, sorry. The question is, who among the following was not a member of the Cabinet Mission Plan? Option 1, A.V. Alexander. Option 2, Lord Patrick Lawrence. Option 3, Sir Stafford Cripps. And option 4, Lord Wavell. Option 4. This is the right answer. Oh my god, it's really genius. Now my next question is for Team D. The question is, who was the president of the flag committee? Option 1, Rajendra Prasad. Option 2, B.R. Ambedkar. Option 3, K.M. Munshi. And option 4, D.B. Khetan. And your time has started. Please repeat the question. The question is, who was the president of the flag committee? Option 1, Rajendra Prasad. Option 2, B.R. Ambedkar. Option 3, K.M. Munshi. And option 4, D.B. Khetan. Oops, the time has been end. So the question has been passed to Team E. Shall I repeat the question? Okay. Who was the president of the flag committee? Option 1, Rajendra Prasad. Option 2, B.R. Ambedkar. Option 3, K.M. Munshi. And option 4, D.B. Khetan. Your time has been started. Pass, okay. So the question has been passed to Team A.
Oh, so the team A will again I'll pass the question. again will pass the question. The question has been passed to team B. Okay. Yeah, the question is, who was the president of the flag committee? Option 1, Rajendra Prasad. Option 2, B.R. Ambedkar. Option 3, K.M. Munshi. And option 4, D.B. Khetan. And your time has been started. Option C. Oops, this is the wrong answer. The team B will get -5. Now my next question is for team E. The question is, who was the founder of renowned Presidency College of Calcutta? Option 1, Raja Ram Mohan Roy. Option 2, D.N. Tagore. Option 3, William Carey. And option 4, Nathaniel Wieland. The time has been started. Raja Ram Mohan Roy. Yeah, this is the right answer. Can we have a huge round of applause for all the team? So round 2 is over and our teams have performed really well. Now let's move to round 3. Dear participants, this is your last chance to grab the top 3 positions. So gear up your mind and let's see the rules of this round. This will be a buzzer round. There will be 5 questions in total. For correct answer, you will get +10 and for wrong answer, you will get a -5. There will be no passing in this round. After the question is asked, you have to ring the bell placed on your desk. The first team to do so gets the chance to answer. So the first question is for for all. The team who will ring bell first, he will answer. Okay. So the question is, who was the first Dutchman to reach India? Option 1, Philip I. Option 2, Philip II. Option 3, Cornelis de Houtman. Option 4, none of the above. Team A will answer the question. Option 3, Human. Yeah. So team A has got +10 marks for this question. Now my next question is, who was the first English president of Indian National Congress? The question is, who was the first English president of Indian National Congress? Option 1, J.L. Nehru. Option 2, George Yule. Option 3, A.O. Hume. And option 4, Henry Cotton. So team C will answer. The question is, who was the first English president? J.L. Nehru, George Yule. George Yule. Yeah, this is the right answer. So team C will get +10 points. Now my next question is, Harijan, the newspaper, was founded by option 1, M.L. Nehru. Option 2, M.K. Gandhi. Option 3, J.L. Nehru. And option 4, A. Gandhi. So team E has to answer this. M.K. Gandhi. Yeah, this is the right answer. So team E will get +10 points. Now my next question is, Lyquid-Nehru Pact was signed in the year option 1, 1947, option 2, 1949, option 3, 1950, option 4, 1955. The one who has rang the bell has... Team C will answer this. 1950. Yeah, this is the right answer. So team C will get +10 points. Now my last question of this round is, which was the first state to be created on linguistic basis? I am repeating the question. Which was the first state to be created on linguistic basis? Option 1, Madras. Option 2, Arunachal Pradesh. Option 3, Andhra Pradesh. And option 4, Gujarat. So team C has answered. Andhra Pradesh. Yeah, this is the right answer. So we have ended this round.
So we are done with all the 3 rounds and the scores can be seen on the scoreboard. Sonali, may I know, is there any tie? No. So since we have not tie, so this round has been ended. For us, we will tell you the results later, and for yourself, you can see the results displayed on the board. It was lovely playing this quiz with you all. All thanks. It was lovely playing this quiz with you all. All thanks to a smart audience and smarter participants. You surely gave a tough competition to each other. Best of luck to all our participants and never stop quizzing because we will never stop questioning. Thank you. Thank you, Radhi, and congratulations to the quiz masters. कभी कभी पता नहीं लगता है माइक की कुछ खासी दुश्मनी है मेरे, दुश्मनी थोड़ी ज्यादा है. अब ठीक है, लगता है माइक के लिए गाना गाना पड़ेगा. ये दोस्ती. Okay, so थोड़ा बहुत नर्वसनेस होगा. इस नर्वसनेस को कम करने के लिए सोहन लाल चतुर्वेदी जी की कविता, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर वापस आता है. मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, इजली मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह इसी हैरानी में. मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती. एंड यू हैव टू रिमेंबर, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. Yes. Very well said, Vikas. This was amazing, I must say. So, moving on further, as Germany can says, do not come into an agreement with fear. Activate your faith, live in victory, speak over your life, and expect great things to come your way. Speech has the power. Speech has the power to persuade. Speech has the power to educate. Before moving ahead, let us introduce you to our judges for speech. Father Anthony Sammy, SG. Director, Novice at Sanjeevani Nivas, Patna. Sister Lisi Matthew, SCSC, former Principal of Holy Cross Senior Secondary School, Sikkim. At present, she is the Vice Principal of Ashadi Fairfield, Patna. Sister Sabina Embram, SCSC, member of Sister of Mercy of the Holy Cross. Sister Ajita CJ is the Provincial Secretary of Patna Province, Congregation of Jesus. May we now request Professor B.N. Chaudhary from the Department of Economics to kindly felicitate our judges of speech competition. Please give a huge round of applause, everyone.
Thank you, sir. Ladies and gentlemen, please welcome our first peace finalist in junior category, SP023. May we now call SP037 on the stage. SP037. Friendship is not just a word. It's an emotion, a feeling, and a bond that is vulnerable, but at the same time unbreakable. A very warm good morning to one and all present here. This is Harsh Marks of Standard 11 from St. Michael's High School, Patna. The amount of happiness, joy, and laughter friendship brings into your life cannot be compared to anything else. Friendship is one of the most selfless bonds in this world. Friends are family that we choose for ourselves. There is no relationship in this world which does not require essence of friendship in it. Unfortunately, we live in a world where everything is looked through the lenses of profit and loss and weighed on the grounds of benefits. And friendship is no exception in it. In this materialistic world, no relationship has been able to maintain its glory. To be honest, one of the most valuable gifts one can ever receive is a trustworthy and an honest friend. Nowadays, friendships are always made on agreements, likes and dislikes, but no, my dear friend, this is not what friendship is. Even if you're apples and oranges, still you can be good friends. A true friend is someone who has the courage to tell you what shit you are and still love you. Friendship is not an advantageous transaction or give and take, but a certain overlapping of life. Friends are the one who put your empty hands in theirs to complete you, the one to whom you can show all your scars that you have been hiding, the one who will sacrifice his own wings for you if your wings are broken, and the one who will stand by you always and forever. Even if you're breaking down, you both can find a way to break through. And even if you can't find heaven, he will walk to hell with you, but he will always stand by you. When you're stuck in the second gear, and it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, he'll be there for you and he will stand by you. He will lift you up when no one even ever noticed that you have fallen. People will always try to break you, hurt you, ignore you, but still you have to survive.
And friends are the ones who will walk with you step by step and will support you emotionally and mentally. I would like to wrap up my speech by saying that Tom and Jerry may fight all day long, but at the end of the day, they will sacrifice their own lives for each other. So always stand by your friend and never give up on them. And show them that you have loved them for 1,000 years and you will love them and you will love them for 1,000 more. Thank you. Thank you, SP023. May we now invite SP026 on the stage. SP023. 23. Coming up is 26. 26. चंदनम शीतलम लोके चंदनातपि चंद्रमा चंद्र चंदनयोर मध्ये शीतला sadhu sangati. A very good morning, one and all present here. Who is a friend? I always wonder, for it's not easy to define. So I ponder. Is it someone who's always there with you, in happiness and sadness, rooting for you? Or is it someone who knows your dreams and ambitions and celebrates all your milestones without any inhibition? Is it someone who is always standing for you and who is always there to listen to you? The question is, who is a friend? Dear people, in this world, today the entire world is on our fingertip. Come on, just give a click and you have friends from all over the world. Right. But just remember that when we are driven towards flattery, it's important to find a true friend. Today, when we all are in search for a purpose of friendship, it's important to realize that where there is a purpose, there can't exist a friendship. There can't exist a friendship. And today, when we all are in search of Krishna as a friend, it's important to realize that we need to be someone's Krishna. A Kanhaiya for Sudama, a Madhav for Arjun, and a Sakha for Draupadi. But friendship is not just tying a mere thread on the day to celebrate. Friendship is not just bunking classes and having fun together. It's beyond it and much beyond it. A friend is one who holds your hand in the trap of sand and shows you green to fulfill all your dreams. Is the sun who sets off in the dark and gives you the light to shine. Are the stars who hold on each other to glitter throughout the dark. A friend is the rain that falls off to quench the thirst of the earth. So getting back to the question, who is a friend? Who is a friend, I always wonder, for it's not easy to define, so I ponder. And one thing that I know through the journey of life, we make friends, each supporting at some point of time. We make friends, each supporting at some point of time. Sometimes they stay, sometimes they say us goodbye. We make adventures, we make memories, we laugh and cry. So in the end, if I am to answer who is a friend, I'll definitely say a fellow traveler in the ship of life till the very end, till the very end, till the very end. With this, thank you so much, but before I end, just leaving few lines for you all to cherish your friendship with your jigra yaar. ऐ खुदा इन ख्यालों का क्या करूं? है खुदा इन ख्यालों का क्या करूं? अंधों की नगर में उजालों का क्या करूं? मालूम है सच बयां करना भी गुनाह है, पर इन उठते सवालों का क्या करूं? अरे जब दोस्तों की सच्ची दोस्ती है पास मेरे, तू ही बताना मैं दुनिया में दुश्मनी की मिसालों का क्या करूं? मैं दुनिया में दुश्मनी की मिसालों का क्या करूं? Thank you very much. Thank you.
May we request SP048 to come on the stage? I repeat, the code number is SP048. A very beautiful morning to all the beautiful faces present here. So today, I like to begin by asking one question. Who is friend? That one kid who stole your candy in school, or the one who taught you everything just a day before your examination, or someone who gained more marks than you in weekly test. Okay, so in a nutshell, let's just say friends are like those chocolate chips in the cookie of your life, or say they are like the carrying shadow who have your face and the voice of your soul who well knows your name. And so today, I, Vaishnavi, through my speech, will recall all those senseless jokes and memories that we, along with our friends, had surely laughed on for so long. So for a long time, I perceived friendship as this perfect series of sleepovers and playdates. Like, if I meant to have a good friend, I would always have to appear myself as a cool and charming person who would be admired by everyone. But over time, I overcame my silly feelings and I realized that a much greater part of friendship exists in those silliest and smallest memories we compile. And I'm sure that includes the funniest joke you made with your class second bestie, or the first fight you had with someone for whom you actually wanted to go to school. So, Honorable Chair and my lovely audience, what I believe is sometimes you meet someone and it's crystal clear that the two of you on some level belong together. You meet these people throughout your life, out of nowhere, under the strangest circumstances, and they help you feel alive. And I don't know if it makes me believe in coincidence or fate or just blind luck. But yes, it definitely makes me believe in something. And it's friendship. A relation. A relation you couldn't part yourself away with even if it costed everything. Because friendship is that relation where there is addition of happiness, subtraction of sorrow, multiplication of joy, and division of infinite memories. So that is what friendship is. Thank you. Have a beautiful day ahead. Thank you, SP048. Now please welcome SP037. I repeat, SP037. Good morning to one and all. I'm here to cheer you up once again. Okay, so let me not make it a 3-minute long non-stop speech. After all, it's friendship. The name itself suggests life, or in fact even adds or sparkles the hall with the melody of some aesthetic beauty. However, this melody does not come to those with open ears, but to only those with open hearts. Just for these 3 minutes, let us dive into friendship. I don't know what will it end up to, but one thing that I promise for sure is a smile by the end of these 3 minutes. To me, it all started with a smile. I didn't know that a smile could tie the thread of a bond which has no end. The way we fall asleep, slowly, and then all at once, is as same as to the way we fall into the tale of friendship. Slowly, and then all at once. Friendship is like a newborn baby, an infant. It's full of happiness, innocence, and mischiefs. However, it's also true that it's pure, and its purity is what makes it divine.
true and divine till the end of time. So now many of us can question this statement. True and divine till the end of time? So what's that which we all see today? The one day BFF forever status update and the very next day not together anymore. However, broken by the test of time and situation are those relations which are meaningless. Lasts only love and faith that is selfless. It's always true to say that a friend can never leave you in your darkest phase. True friendship is complete self-deliverance, Purn Samarpan, complete self-deliverance of one towards another. True friendship does not ask for self. It always believes in giving. It's not the presence or the physical presentation that completes a friendship. It's the determination, the courage, the faith to go through all the storms, irrespective and in spite of what you are going through. At last, I would conclude by saying that if you want to recognize the true friend of your life, then just wait. Because it's not the day that shows you the stars, does it? It's the night that brings you to the reality of stars. A glitter that burns in the sky to light up your life in the darkness is a real star, a real friend. Thank you. Thank you. Thank you. We now welcome our next contestant, SP009. I repeat the code, it is SP009. When you are with me, time just flies away. When you are not around me, even a second seems like days. A very warm and pleasant good morning to one and all present here. This is Medha Verma of St. Karen's Secondary School, and I am here to deliver a speech on a very beautiful topic, that is friendship. Friendship, it is one of the most hardest things that you can explain in words. It is a feeling that one cherishes and a bond that one experiences. Friendship is the best thing that you have and the greatest thing that you can give. A strong friendship does not require being together. It also does not require daily conversation. What it requires is a feeling that it is always there in a heart and you will be never apart. As humans, we meet many people in our life, but only a few become very special to us. The one who leaves a footprint in your heart, a footprint that will always be there for you. A friend is a person that sees you in pain when the entire world believes on the smile that is plastered on your face. A friend is like that diamond that reflects the light of your spirit. They are those sunshines that make your heart bloom in happiness. But this friendship is always not the same for everybody. For many people, this friendship brings destruction. To some, this relation brings destruction. The fact is, we live in a world that is full of materialistic people. The people who are selfish, the people who are greedy. And so, it is very difficult to find a true friend. We as an individual should always remember that we should never be desperate in choosing friends. You must always be wise when you choose friends and stick around people that brings the magic out of you and not the madness. You must always remember a true friend is that rare star in the sky that helps you and finds you in the darkest place and leads you to light. At last, I would say by concluding my speech, friendship is an inexpressible feeling of being safe, comfortable with the person having neither the weight of words nor the measure of thoughts. Thank you and have a nice day. Thank you. everyone. A German priest
An author and composer, Martin Luther says, "My heart, which is so full to overflowing, has often been so laced and refreshed by music when sick and weary." Rightly said. मैं खाने के बिना रह सकता हूँ, लेकिन गाने के बिना नहीं. We are happy to have among us Mr. Deepak Daniel. Sir, you are a Sir, you are a pianist and have completed grade 8 in piano from Trinity College of Music, London. You have also performed in various parts of India. Mr. Jobin Joseph, a keyboardist and singer. Sir, you have done 8 years of coaching of keyboard and guitar. You're the member of South India's first children's orchestra. Mr. Ruth LKR from Nagaland. Sir, you have been a vocal coach, singer, and a performer in Nagaland. You have also been a trainer, teacher for the School of Worship Yam Lonavala, Yam Denver, and Kona, University of the Nations. You are currently a singing coach at Kafka Academy. May I now request Assistant Professor Supriya S. Kumar to felicitate our judges. We are all set. Stage is ready to wait more. बिल्कुल और मैं बेसब्र होता जा रहा हूँ. और तुम्हारी बेसब्री को कम करते हैं. We have with us our star singers. Ladies and gentlemen, boys and girls, please put your hands together for our first finalist of the day, SA008. Hello? देखो गगरिया बरन देता, देखो गगरिया बरन देता, ऐसो श्याम सुंदर बल जोरी किया, देखो गगरिया बरन देता, देखो गगरिया बरन देता, ऐसो श्याम सुंदर बल जोरी किया, देखो गगरिया बरन देता, देखो जित जाऊं उतरो कत थारे, जित जाऊं उतरो कत थारे, अब नर अब तोरी नगरिया, देखो गगरिया
वरन देता देखो गगरिया वरन देता सो श्याम सुंदर बल जोरी के आ देखो गगरिया निरे गरे निरे गम पम गरे गम वर निरे निरे पम गम पम गरे गरे निरे गरे निरे ता देखो गगरिया वरन देता देखो जत जाऊं ओ तरो कत तारे जत जाऊं ओ तनी धनी 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 जत जाऊं ओ तरो कत तारे धनी 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 ध मबदनी ध मबदनी ध मबदनी ध जत जाऊं ओ तरो कत तारे अब नर अब तोरी नगरिया देखो गगरिया वरन देता देखो गगरिया वरन देता सो श्याम सुंदर बल जोरी के आ देखो गगरिया देखो गगरिया देखो गगरिया वरन देता Thank you for this soulful performance, SS008. यार विकास, Xavier की भीड़ में जोश नहीं लग रहा. Okay. How's the Josh? How's the Josh? I said, how's the Josh? जोश तो है. एक बार और जोर से करते हैं. How's the Josh? How's the Josh? अब हुई ना बात. Okay, so next we have with us SS012. Please give a huge round of applause for them. A huge round of applause for SL012. Love was when I loved you. One true time I hold you.
Thank you. Wow, that was a really mesmerizing performance, I must और say. इसे कहते हैं आवाज में सादगी. So Next we have SS'030. The next code coming up is SS'030. Can we have a huge round of applause? ladies and gentlemen, put your hands together. Hello, hello. एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर तुमने मुझको हंसना सिखाया हो तुमने मुझको हंसना सिखाया रोने कहोगे रो लेंगे अब रोने कहोगे रो लेंगे अब आंसू का हमारे गम ना करो वो बहते हैं तो बहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर थैंक यू सान तेरा होगा मुझ पर. यार मुझे जेस्ट से मोहब्बत हो गई है और मुझे यहीं पर रहने दो. Okay, so we now call SS'40. Please give a huge round of applause for SS'40. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you're kicking me out. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'd be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfection. Give your all to me, I'd give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. So I give my whole
and you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. And I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfection. Give your all to me, I'd give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose or win. Thank you, everyone. Thank you, SS'40. We now have our next contestant, SS'53. The code number is SS'53. Hello, hello. क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन न होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। याद है मुझको तूने कहा था, तुमसे नहीं रूठेंगे कभी। तेरा वादा। खैर हमने तो अपना वादा पूरा कर दिया है। XEST'22 is finally happening, and thank you to all our star singers. You guys were really rocking. Moving ahead, we Wait have... a moment. I have a surprise for you. We have with us our painting judges for painting, Jitendra Mohan, sir. Sir is an assistant professor in the painting department, College of Arts and Crafts, ARA. Sir, you have been awarded with the All India Art Exhibition Award by the Art and Cultural Department, Government of Bihar. May I now request Assistant Professor Priya Gupta from Department of Commerce to felicitate Jitendra Mohan sir with a sapling.
All of you are requested to please maintain silence. Next, we have with us Mr. Danish Kumar. He is an assistant professor in the Department of Fine Arts and also the vice principal of the College of Arts and Crafts, ARA. Sir, you have been awarded with the College Annual Art Award in 1985, 1987, and the AIFCS Painting Award. May I now request Sister Jaya to felicitate our chief guest with a sampling. Thank you, ma'am. Ladies and gentlemen, there is an announcement to make. As there is a tie in quiz competition, we again request our quiz masters, Riddhi and Preeti, to take over the stage. Sorry guys, you'll have to come to the quiz once again. So, If there is a tie between Team A and Team E, so we will have a tiebreaker round to break this tie. So the rules of tiebreaker round are: there will be total 3 questions, plus 1 point will be given for every correct answer, and minus 1 point will be given for every wrong answer. The team who will raise her hand first will answer the question first. Time allotted is 10 seconds for every question. No passing is allowed. You will raise your hand only after we will finish the question. So the first tiebreaker question is, Mahak Satyagrah was led by option 1 Mahatma Gandhi, option 2 Dr. B.R. Ambedkar, option 3 Bal Gangadhar Tilak, option 4 Vinoba Bhave. And your time starts now. Mahat Satyagrah was led by Team A. Vinoba Bhave? No, it's the wrong answer. The correct answer is Dr. B.R. Ambedkar. So Team A will get minus 1 point. Now the second question is, in which province Muslim League formed their first government after 1946 elections? In which province Muslim League formed their first government after 1946 elections? Option 1 Bengal, option 2 Madras, option 3 Bombay, option 4 United Province. And your time starts now. Team E. Bengal. Yes, you have given the correct answer. It's option 1 Bengal. So you get plus 1 point. Now the third question. Which act during British India gave the power to the president to issue ordinances? Option 1 1919 Act, option 2 1909 Act, option 3 1935 Act, option 4 1947 Act. And your time starts now. You have to raise the hand if you want to answer. Repeat the question. So, I am repeating the question. Which act during British India gave the power to the president to issue ordinances? 1919 Act, 1909 Act, 1935 Act, 1947 Act.
So if no one has raised their hand, so we'll skipping this question. So here the tiebreaker round has been ended. So best of luck to all the participants. Result will declare later. Thank you. Thank you. Thank you, quiz masters. आगे बढ़ते हैं। रुको 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 एक शेर सुनो। ठीक है, शेर सुनो। बोलिए। अभी हमारे ऑडियंस जो है डिमोटिवेट हो गए होंगे, तो एक मोटिवेशन के लिए एक शेर है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हिमालय की चोटी पर जा पहुंच। वाह वाह कर दो यार, शुक्रिया। खुदी को कर बुलंद इतना कि हिमालय की चोटी पर जा पहुंच, जैसे तैसे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हिमालय की चोटी पर जा पहुंच, जैसे तैसे। फिर पूछे तेरा खुदा तुझसे, अब उतरेगा कैसे। शुक्रिया शुक्रिया। तुम्हारी ऑडियंस अच्छी है, वरना जोक बहुत गंदा था। ओके ओके। इससे अच्छे तो हमारे स्टैंड अप कॉमेडियंस कर लेंगे। Okay, so before calling our stand-up comedians, let me introduce you to our judges. We are happy to have with us Mr. Alok Gupta sir. Sir is a veteran theatre artist. You have acted nearly in 100 plays and you are an alumnus of Xavier School, Patna. You are a big name in Patna theatre. Mr. Shlok, sir, you're an artist, performed and have been part of several events across India. You have also been there in more than 100 open mics. तो देर किस बात की, बुलाते हैं हमारे पहले स्टैंड-अप कॉमेडियन को। Please welcome SU00. A huge round of applause for our first contestant, a stand-up comedy. SU004. Okay, when I was filling form, साफ साफ लिखा था कोई भी रिलीजन को टारगेट नहीं करना है। तो लेट मी टेल यू माय नेम, माई सेल्फ रिफा आलम, नाम से पता चल गया होगा। और बेस्ट पार्ट ये है, आप में से कोई हमसे प्रूफ नहीं मांग सकता कि आईडी दिखाओ, क्योंकि आप सब चाय वाले नहीं हो। और दूसरी बात ये लिखी थी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को टारगेट नहीं करना है। तो हम लोग इस टॉपिक पे तो बिल्कुल डिस्कस नहीं करने वाले कि किसकी सरकार आने से पेट्रोल 60 से 120 हुई। वैसे भी इंडिया में सीरियस टॉपिक पे बात कहाँ होता है? सीरियस टॉपिक इन इंडिया इज तैमूर अली खान की चड्डी किस कलर की है। हमको मीडिया वाले से लिटरली ये सवाल पूछना है, हमको कौन से उससे ब्याह करना है जो हम उसका चड्डी का कलर जानेंगे। वो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, नॉट बिकॉज ड्यू टू एज गैप, ना, क्योंकि मेरे बाप के पास उतना पैसा नहीं है, क्योंकि वो ड्रग्स नहीं बेचते, नहीं सॉरी, क्योंकि वो बॉलीवुड में नहीं है। और जैसे न्यूज चैनल वाले फेक न्यूज बेचते हैं, आई मीन सॉरी, अपना फेक प्रोडक्ट बेचते हैं, वैसे फिल्टर क्यों नहीं बेचते? वो तो फिर भी रियल है। मैंने एक लड़की को देखा, हम उसको 3 फोटो में देखे, लिटरली वो बंदी हमको तीनों फोटो में अलग दिखी, हर फोटो में अलग। और सामने देखे तो हम उसको पहचान नहीं पाए, वो मेरे सामने से गई। जिंदगी में बस आपको एक अच्छे फिल्टर की जरूरत है। अगर आपके पास एक अच्छा फिल्टर है तो आप हुस्न पर ही, आप जाने जहां, आप सबसे हंसी, आप सबसे सौंदर्य सब निर्मा। और वैसे भी हमारे देश के मर्द आजकल समझदार हो चुके हैं काफी ज्यादा, नई सरकार के आने से। नहीं, पहले उतने नहीं थे जितने अब हो गए हैं। नहीं, उतने तो नहीं थे फिर भी, क्योंकि वो भी समझ चुके हैं जरूरी नहीं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अगर ऐसा होता तो आज ये देश ना चल रहा होता। और हम तो एकदम नहीं मानते कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। हम अपनी मम्मी को देख के ही बोल सकते हैं। हम बोले मम्मी मेरा स्टैंड अप में सिलेक्शन हो गया है, शी इज लाइक तुम्हारे बात पे तो कोई हंसा नहीं होगा, तुम्हारा मुंह देख के हंस दिया होगा लोग। वहां तक तो फिर भी ठीक है, वहां हमको बुरा नहीं लगा। आई एम लाइक हाँ, ये तो हमेशा ऐसे ही
बेइज्जती करके बोलती है स्पोर्ट शूज पहन के जाना, भागने में आसानी होगा। आई एम लाइक मम्मा आप लोग दिलवाते का, वो एक जोड़ा जूता में तो आप पूरा साल कटवा देते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन हमारी कंटेस्टेंट ने अपनी मम्मी की बात मानी है, आई वो स्पोर्ट्स शूज में ही है। हाँ आज्ञाकारी बेटी, राइट। बोलो। May we now welcome SU005 on the stage. We repeat, SU005 on the stage. तो हाय भाई और हेलो। तो हाय भाई और उनकी बहनों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, बात है कुछ आज से 7-8 महीने पहले की, जब सबसे पहले एक चाय वाले ने क्या बोलते हैं देश में नोटबंदी करवाई, फिर कुछ सालों बाद देशबंदी। तो हाय भाई और उनके बहनों, तो कैसे हैं आप लोग? तो बात है कुछ आज से 7-8 महीने पहले की, जब चल रहा था लॉकडाउन का जमाना, और क्या बोलते हैं चाय वाले ने सबसे पहले तो क्या बोलते हैं देश में नोटबंदी करवाई, फिर उसके बाद देशबंदी। फिर कुछ दिनों की फिर उसके कुछ दिन बाद एक मेरा भूला बड़का दोस्त है, वही पीछे बैठा है, कहा बेटा, ये एक दिन कॉल करता है मेरे को, ना हाय ना हेलो, सीधे बोलता है भाई कौन सी सिम ले रहा है। आई बी लाइक रुक जा। अपन बोलते हैं क्या कि अगर आर्ट्स लेंगे तो अब्बा नहीं मानेंगे, साइंस लेंगे तो मन नहीं मानेगा, इसलिए आई डिसाइडेड टू टेक कॉमर्स इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ पढ़ा लिखा बेरोजगार। तो होता क्या है, इस लौंडे का अलग ही सीन चल रहा था। ये एक दिन क्या बोलते हैं कॉल करता है, बोलता है भाई देखो मैं कॉमर्स ले रहा हूँ, मेरे को निकालना है एनडीए। आई विल लाइक अगर तू एनडीए निकाल सकता है तो मैं सीए निकाल सकता हूँ, वही फर्स्ट अटेम्प्ट में। और तेरे बगल में बैठा वो पीसीएम वाला मैकेनिकल लेके जॉब पा सकता है, ठीक है। फिर एक दिन ये कॉल करता है, बोलता है भाई आई लाइक अ गर्ल, क्या करूं, कुछ टिप्स दो। तो अपन बोलते हैं जा तू स्टड बन के फुल ऑन एटीट्यूड में जाके प्रपोज मार दे। इसको क्या बोलना था, ये क्या करके आ गया। इसको जाके बोलना था तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुमसे हंसी कौन तुमसे जवां। ये जाके बोलता है एकदम सैलमन भाई बन के, बाल में चमेली का तेल लगा के, हाथ में 25 रुपए का गुलाब लेके जाता है, जाके बोलता है एक्सक्यूज मी दीदी एक्सक्यूज मी दीदी, लव यू दीदी। थोड़ी देर तक वो लड़की उसको देखती है, फिर हंसती है, फिर बोलती है लौंडा कर क्या रहा है, फिर बोलती है थैंक यू भैया थैंक यू। सो आई वुड लाइक टू एंड ओवर हियर। हमारे कॉन्टेस्टेंट के स्टोरी से रिलेट कर सकती हूँ मैं, जब एक फर्स्ट ईयर ने मुझे बोला ये मजदूर कहा थे कातिया, लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है, लेकिन हमारे कंटेस्टेंट्स ने माहौल बदल के रख दिया यहाँ पर। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल स्टैंड अप कॉमेडियंस। Now let's welcome SU006. I repeat, let's welcome on the stage SU006. Good afternoon, Xaviers. So, my name is Himadri Kamlapriya and I am from Don Bosco Academy, okay?
So, I'm wearing a skirt, check shirt, 2 plates with an identity card. तो आप गेस करो, मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे किसकी ज़रूरत है? टीचर्स की. पढ़ाई तो टीचर्स कराएंगे ना, तो टीचर्स की. Okay? So we will talk about our teachers. First of all, my mother is a headmistress of a high school. Mama, hi. तो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है टीचर्स के लिए. ये जो भी करूँगी सिर्फ फन के लिए करूँगी. यूएसए में अगर एक हैरी नाम का बच्चा बेंच पे खड़े होकर मस्ती करेगा ना, तो उसके टीचर सिर्फ इतना बोलेंगे, हैरी सिट डाउन हैरी. उधर इंडियन टीचर्स को भेजो, हैरी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, चश्मा उतारो. मायरे माय. इसके बाद हैरी कभी बदमाशी नहीं करेगा. इंडियन टीचर्स की मार में ना बहुत पावर होती है. मतलब मेरे स्कूल में एक बायोलॉजी टीचर ने एक बच्चे को मारा, उसके मैथ्स में मार्क्स आने शुरू हो गए. मतलब कनेक्शन देख रहे हो आप. एक बार मैंने होमवर्क नहीं किया, ठीक है, तो मेरे टीचर ने बोला, होमवर्क क्यों नहीं किया तुमने? मैंने बोला, सर मैं भूल गई. सर ने बोला, खाना खाना तो नहीं भूलती, सांस लेना तो नहीं भूलती. तो मैंने बोला, सर मुझे एज़मा है. आप बोलो. टीचर्स की ना एक फेवरेट चीज होती है, स्केल. आप घर जाके चेक करो, वो स्केल वाले भैया ने उधर मार्किंग देना भी छोड़ दिया है. अब वैसे टेढ़ी मेढ़ी स्केल बनाते हैं. आप कभी टीचर से पूछना, सर आपने कभी लाइन खींचने के लिए इस्तेमाल किया है? नहीं, क्योंकि टीचर्स की स्केल लाइन खींचने के लिए नहीं, लाइन पे लाने के लिए होती है. आप हर एक क्लास में एक बच्चा होता है जो आपसे 3-4 साल बड़ा होता है, पर फेल होते होते आपकी क्लास में आ जाता है, और उसे पनिश करने के लिए टीचर को भी क्रिएटिव होना पड़ता है. मतलब कभी उसे कान में मोड़ते हैं, कभी उसे लास्ट बेंच पे खड़ा करते हैं, और जब लास्ट बेंच पे खड़ा होता है ना, तो वो ऊपर वाली क्लास अटेंड कर रहा होता है, क्योंकि वो बहुत लंबा होता है. अपने दोस्तों को हाय. तो मैं बेसिकली ना लखनऊ से हूँ, ठीक है. तो वहाँ एक टीचर थे, उन्होंने बोला, व्हाई हैव यू लव्ड? आई वाज लाइक, सर आई हैव नॉट लव्ड. सर वाज लाइक, आई हैव सीन यू लव्ड. और एक बार तो सर कंफ्यूज हो गए, 3-4 ऑप्शन फेंक के बोले, व्हाई हैव यू बीन लव्ड? मैंने भी पेंसिल उठाया, ओह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ऐसे ही तो कॉमर्स लेके जी क्रैक करूंगी मैं. बचपन में ना मेरा एक फेवरेट पीरियड था, क्राफ्ट पीरियड. उसमें ना मतलब पहले पहाड़ बनाओ, नदी बनाओ एंड व्हाट नॉट. फिर उसमें कलर नहीं भरना है ना, उसमें तार चिपकाओ, आमंड्स के छिलके चिपकाओ, पेंसिल के छिलके चिपकाओ. सर ने बोला, बेटा हम इससे वेस्ट मैनेजमेंट सीखते हैं. मैंने बोला, वेस्ट मैनेजमेंट? सर ये तो वेस्ट था भी नहीं, जबरदस्ती आपने इसे वेस्ट बनवाया है. हम मेरी फैमिली तो पूरी रात भर बैठ के हमने आमंड्स खाए हैं, तब जाके ये प्रोजेक्ट सबमिट हुआ है. आपको पता है इंडिया ना मैथ्स में बहुत आगे है. मतलब एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इंडिया बहुत आगे है. पता है क्यों? क्योंकि हमें बचपन से ही गाना सिखा दिया जाता है, 2 दूनी 1, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2. मतलब क्या भाई. पर जो भी बोलो, आजकल के बच्चे बहुत ढेर हैं, ना जाने इतने नंबर कहाँ से ला रहे हैं. मतलब हम तो 6-7 भाई बहन थे, खूब दिल लगा के पढ़ाई की, तब भी 70-80% मिला के सबके नहीं आए. Thank you. I hope you all enjoyed it, and thank you so much. हमारी कंटेस्टेंट की एक बात थी कि हैरी लाइन पे आ जाता है. मैं कहना चाहती हूँ कि हैरी बैक बेंचर बन जाता है. संगमित्रा, अगर टाइटैनिक अगर भोजपुरी वर्जन बना होता तो उसका नाम क्या होता? डूब गई जहाज. नहीं, डूब गई जहाज नहीं. लेडीज एंड जेंटलमैन, नौका देहलस धोखा. Right? Nauka Delas Dhoka. Okay, so without wasting further time, and welcomes SU007 on the stage. I repeat, SU007 on the stage. Please give a huge round of applause. Hey, hello, my name is Harsh, and I did my 10th from 2020 batch. And firstly, I would like to thank all the judges for providing this amazing platform and stage for us to grow. क्योंकि अब मैं बेइज्जती करने वाला हूँ. जब ये पहली बार शो पोस्टपोन हुआ, तब मेरे को बस यार एक ही चीज माइंड में आया था, मेरा बोर्ड एग्जाम, जो कि हुआ भी नहीं था. ऐसे ही पहली बार जो पोस्टपोन हुआ था.
एक तो मेरे 10th में मेरे मार्क्स भी कुछ खास नहीं आए थे, बट गलती मेरी नहीं है, मेरे टीचर इतने कूल है, मतलब वो मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं क्लास शुरू होने के 4 महीने बाद। मेरा एग्जाम है 1 हफ्ते पहले, एंड यू नो वी आर फ्रॉम सच एन एनलाइटेंड बैच, मतलब चीटिंग करने के लिए भी टॉपिक पढ़ा होना चाहिए, हमको रियलाइज हुए सबसे पहले। किताब सामने हमने क्या है, क्वेश्चन ऐसे ऐसे, चूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, हमने ये क्या है, यहाँ पे तो गूगल भी नहीं चलता। एक तो क्वेश्चन ऐसे ऐसे, मतलब पढ़ाते क्या ऑनलाइन क्लास में मेरे को ये नहीं पता। यहाँ पे सर पढ़ा रहे ग्रेविटेशन, वहां पे वो लौंडा देख रहा है लचकते कमर इंस्टाग्राम पे। कुछ भी चल रहा है यार। एक तो ये बोले स्टील, ये स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, वो रबर जिससे नोबिता बटरफ्लाई बनाता था 5 में। हद है यार, कुछ भी चल रहा है। सो एक तो इंटरनेट ने इतना बर्बाद कर दिया है, सही बता रहा हूँ। लाइक आई वॉज स्क्रॉलिंग थ्रू यूट्यूब, हाँ क्योंकि कंटेंट ही खत्म हो गया था इंस्टा पे। I was scrolling through YouTube and it was like I found a video ki listen to this and you will fall asleep in 10 hours. So in fall asleep in 3 minutes. वीडियो का लिंक थे 10 hours. मैं बस सोच में पड़ा, 3 मिनट की वीडियो तो ये नहीं, मैं सोच में पड़ा ये डाल कैसे रहे इतने सारी वीडियोस। मतलब मैं अगर कोशिश भी किया, मेरा ब्रॉडबैंड वाला खुद मेरे को लोडी गा के सुलाएगा। So this is it from me guys. This is Harsh Srivastav. एक बार जोरदार तालियां हमारे स्टैंड अप कॉमेडियंस के लिए। सच में यहाँ खड़ा होके आप सभी को हंसाना बहुत बड़ी बात होती है। Really? Next we have is SU008. Big huge round of applause for SU008. नमस्कार एवरीवन, तैयार है ना आप लोग कॉमेडी देखने के लिए? टॉपिक है मेरे पापा। ये टाइटल है जी, टाइटल में कॉमेडी नहीं है, कॉमेडी है मेरे पापा की अदाओं में, उनकी हरकतों में। मॉडर्न युग में मेरे पापा पक्के पुराने टाइप के पापा हैं। टी नहीं समझते हैं जी, चाय को कहते हैं चाह। खूब चटखारे ले लेकर अपनी चाह पीते हैं। मुर्गा मुर्गी नहीं खाते हैं, पापा इसे पाप समझते हैं, हिंसा कहते हैं। अंडा भी नहीं छूते हैं जी, कहते हैं छुआ जाएंगे। चलिए एक और बात बता दूं, वे अपनी मम्मी को माई कहते हैं ए माई। किताब पढ़ते हैं, पढ़ाकू हैं, एकदम पढ़निहार हैं, लेकिन सीरियस रहते हैं। ग्रेविटी मेंटेन करते हैं, गुरु गंभीर हैं। मेरी सहेलियां सब बहुत टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट, तेज तर्रार और कुछ तो चुगलचाई भी। चुगलचाई मीन्स नहीं मुझे, चुगलखोर अव्वल दर्जे की, सुपरलेटिव डिग्री की, अगली पंक्ति से भी आगे रहती हैं। वे सब मेरे पापा से डरती हैं, कहती हैं सबका बाप बाप होता है और तेरा बाप बाप रे बाप है। मुझे कभी कभी अचंभा होता है, मन में ही विचारों का दंगा होता है। इस युग में भी इतनी पुरानी सोच, विचारों में कहीं लचक न लोच। रखते नहीं मलाल, रिग्रेट, पछतावा, रखते नहीं मलाल, करते नहीं भूल चूक, हरदम बात करते हैं सीधी सपाट दो टूक। पापा रहते नहीं कभी भी उदास, लगा देते हैं किसी की भी क्लास। गलती करने पर कहते हैं कहाँ से बुद्धि लड़ाता है रे, क्यों फटे में टांग लगाता है रे।
पकलोल, चपाट, यही सब सिखाते हैं। ठीक से राह नहीं तो तुरंत तारा दिखाते हैं। औपचारिकता से रहते हैं दूर दूर और इसे मानते नहीं है अपना कसूर। वे रहते नहीं, वे गलती को करते नहीं है माफ, लगा देते हैं किसी की भी क्लास। चम्मच और कांटे से उनको खाना नहीं आता है जी, प्यार रखते होंगे दिल में मगर जताना नहीं आता है। लेकिन ठहरिए, पापा सारी कमियां लेकर भी सब पे भारी हैं। हमारे लिए जागते हैं इसीलिए उनकी आंखों में नींदें तारी हैं। पिता बच्चों की खातिर पसीने में सनता है, पिता बच्चों की खातिर पसीने में सनता है, उसकी खातिर एक शुक्रिया तो बनता है। धन्यवाद। पिता की खातिर एक शुक्रिया तो बनता है। संगमित्रा, सुनील शेट्टी को जानते हो? हाँ। सुनील शेट्टी, that guy. Yeah. So, मान लो कि सुनील शेट्टी 4th या 5th फ्लोर पर से नीचे गिर जाए धरती पर, ठीक है? और वो बच गया। मान लो 17th फ्लोर से सुनील शेट्टी धरती पे गिर जाए और वो बच जाए। अरे तुम तो ऊपर ही ले जा रहे हो। नहीं, 17th फ्लोर से सुनील शेट्टी धरती पे गिर जाए और बच जाए। हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं, ये धरती उसकी माँ है। ये धरती मेरी माँ है सर। या you remember that? You remember? Yeah. So ये जो शांति है, तूफान के पहले की शांति है। So ladies and gentlemen, please welcome Aman from BMC 3. हेलो, डरो मत, हम कंपटीशन में नहीं है। ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं सर, यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, और पीछे। अबे आदमी है, देश थोड़ी है कि पीछे चले जाए। ठीक है। हाय गाइस, माय नेम इज अमन, आई एम फ्रॉम दिस कॉलेज ओनली, ठीक है? और अभी ऐसे ही व्हाट सर? नहीं नहीं, हम सर वो पहले हम क्लियर कर चुके हैं। हम कंटेस्टेंट नहीं है भाई, हम थोड़ा पैसा लेके भागेंगे नहीं। चिंता मत करो। तो यहाँ पे सरकार की बात हो रही थी, पापा की बात हो रही थी, सबकी बात हो गई, ठीक है? कुछ हम भी एग्जाम की बात हो रही थी, किसी एक ने आया वो एग्जाम का बात किया। 10th तक मेरा साइंस से बहुत इंटरेस्ट था। 10th तक बहुत इजी साइंस होता है, फिजिक्स। कौन कौन यहाँ पे पीसीएम से? गिव मी अ चीयर। ठीक है, 10th तक भाई सब रिलेट करोगे। 10th तक ना बहुत आसान, मतलब कि न्यूटन का 3 लॉ, इधर से 5 न्यूटन, इधर से 10 न्यूटन, बीच से कितना न्यूटन, ठीक है? कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो 10th तक हमको लगा कि भाई हम तो न्यूटन के बाप हैं, ठीक है? मतलब हम 4th लॉ ऑफ मोशन इन्वेंट कर देंगे, ठीक है? तो 11th में हम ले लिए, हमको इंजीनियरिंग करना था, इंजीनियरिंग पेयर प्रेशर में आ गए, तो 11th में ले लिया हम पीसीएम, ठीक है? भाई पीसीएम का फिजिक्स का पेपर FA1 फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 पेपर आया, क्वेश्चन पेपर, हम उसका ऐसे कवर खोले, आत्मा उतर के ऐसे रेलिंग पे चढ़ गई, ठीक है? और ऊपर से आत्मा पूछ रही है रहे कि निकले, ठीक है? मतलब भाई एक क्वेश्चन था, सब को पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा। एक बंदर है, क्वेश्चन देखो, एक पेड़ है, पेड़ के टहनी से बंदर लटका हुआ है, बंदर के पूंछ से फूल लटका हुआ है, फूल से पत्थर लटका हुआ है, और पत्थर जो ऑसिलेट कर रहा है 7 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो बताओ बंदर, मैंने पहले बंदर को नीचे उतार, ठीक है? क्योंकि अगर उसने 2 नंबर कर दिया, स्पॉटिफाई पे गाना कौन कौन सुनता है? गिव मी अ चीयर। बाकी सब जियो सावन पे सुनते हो क्या? भाई स्पॉटिफाई पे ना हम वर्कआउट करते हैं और हम गाना सुनते हैं, ठीक है? तो बहुत अच्छा गाना, लूज योरसेल्फ इन द मोमेंट, द म्यूजिक यू ओन इट, चल रहा है, बीच में इतना बेइज्जती करने वाला ऐड आता है और एकदम सरकाज़म के साथ बेइज्जती करेगा तुम्हारा, ठीक है? अरे चल रहा है लूज योरसेल्फ, आप यही हो, आपके दोस्तों ने तो स्पॉटिफाई प्रीमियम ले लिया, ठीक है? मैं कहा तू बैठ जा। सही है। यहाँ पे लड़ाई किसने किसने की स्कूल लाइफ में अपने? बहुत लड़कियां पे हाथ उठा रही, गुड टू सी वुमेन एम्पावरमेंट। यस भाई, 2 लड़कियों को लड़ते हुए देखने का मजा ही कुछ और होता है,
ठीक है, फिजिकली। कैट फाइट नहीं भाई, पागड़ बिल्ली फाइट, ठीक है। मतलब क्योंकि हम जो लड़कों के पास जो चीज नहीं होती हम लोग क्या करेंगे, मार देंगे, किक कर देंगे, कुछ भी। भाई लड़कियों के पास एक चीज होती है पकड़ने वाली, जुल्फें। भाई जो छोटा छोटा वो होता है, ठीक है, बिहारी स्लैंग में। एक बार मैटर क्या क्या, अबे भाई बहन के बीच में, माँ बाप सबके बीच में होता है। तो लाइक एक बार ना मेरा मैटर हो गया है, ठीक है, मेरे स्कूल के बाहर कुछ कुछ था। तो एक मेरा दोस्त है नमन, उसका मैटर हो गया, हम उसके दोस्त थे, पता नहीं क्यों दोस्त थे। तो ऐसे हम लोग बाहर निकले, कोई हम लोग का फील्डिंग बैठा दिया, ठीक है, सेटिंग कर दिया हम लोग का। तो हम लोग 2 लड़के और सामने 50 लड़के, भाई 50 लड़के, ठीक है। हम लोग स्प्लेंडर से थे, वो लोग बुलेट से था, ठीक है। तो क्लास डिवीजन पहले ही क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है। भाई नमन उतरा, हम भी उतरे, हम शुरू से ऐसे ही थोड़े थे बड़बोले टाइप के। तो सामने से एक आता है आदमी, जो लड़का जो मेन गुटबाज होता है, जो मेन एक होता है बीच बिचौली, ठीक है, वो मैटर शांत कराने वाला रहता है, ठीक है। पहले तो उसको मारो, ठीक है, ठीक है। आता है बीच में, और ना मैटर मतलब ऐसा होना, जब एंटी पार्टी और पार्टी एकदम यहाँ पे, एकदम मैटर शुरू एकदम यहाँ तक आ जाएगा, मतलब लगभग किस कर लेगा अब, ठीक है, मतलब इतना पास आ जाता है वो लोग, ठीक है। अरे मारो, खत्म करो, ठीक है। तो आता है, बोलता है नमन को, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो हाथ छोड़ के दिखा। हम बोले, अगर तूने अपने बाप का दूध पिया। भाई 50 में से 49 आदमी गायब, ठीक है। एक आदमी के पापा से मिलना है हमको। That's all from my side, guys. Lovely audience. Thank you so much. Thank you. यार सही में जहाँ एग्जाम्स की बात आती है, एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने भी एक बार आईआईटी ट्राई किया था, और यू विल बी प्राउड टू नो मेरे मार्क्स 10 डिजिट में आए थे। मैं डिजिट्स देख के कंफ्यूज हो गया था। ओके, सो एक होता है कि रैंक, सॉरी, एक होता है कि जब आप इंटरव्यू में जाओ और इंटरव्यू अगर आपको सेलेक्ट करना हो, अगर वो आपको सेलेक्ट करना चाहता है तो वो पूछेगा अपने मामा का नाम बताओ, और अगर वो नहीं सेलेक्ट करना चाहता है तो पूछेगा मेरे मामा का नाम बताओ। सो ऐसे भी फंसने वाले हो। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी विल हैव अ ब्रेक एंड वी शैल सी यू अगेन एट 1 PM. थैंक यू। सर आप एक और मांगे थे ना? एक और। तो चार्ज इसको लगाना चाहिए। नंबर लिख लिया था? चला जाए। चलना अभी तो वहीं कर जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं। मुझे भी कूपन लगेगा। यही स्कैन होगा। बता देंगे भाई, नर्वस देख के बोलता है चल मेरी माँ बता देंगे। रुका हुआ है ना, हम बता देंगे। चल रहे
अच्छा कैमरा उठा लो आप। सर यार उसमें क्या जा रही है? हाँ यस सर यस सर। बताओ सबको यार, जो नहीं है उनको छोड़ दो। जैसे आयुष नहीं था तो छोड़ो छोड़ो। 1 2 और कहाँ गए वीर? यस सर। गौतम 4 एक और कौन है? 2 थे, एक स्मृति थी और एक राघवी थी। 4 2 6 एक और बच रहा है। कोई फोटो कौन है? हर्षित कुमार ले लिए मिल गया मिल गया। ठीक है जाओ जाकर तुम लोग खाना लो। ये कहाँ है? चार्ज रहेगा कैमरा चार्ज रहेगा। और विकास तुम यही हो अभी? यहीं हो? सर यहाँ पे ठीक है यहीं रहो। चलो जल्दी जाके करना है।
नहीं नहीं
फूड कूपन मिला है सर? स्टैंड अप कॉमेडी था, ये सब हो गया, पोएट्री हो गई, उसके अलावा ये पहले लीजिए अभी सर जैसे ये खत्म हो गया, यहाँ तक ब्रेक चल रहा है ठीक। इसके बाद फिर पोएट्री कंपटीशन है, पैनल डिस्कशन, रैप वगैरह है, और ये 2 दिन का है। तो आज सेमीफाइनल है और कल फाइनल है जिसमें फैशन शो है वगैरह वगैरह सब रहेगा। ब्रेक कल की भी टाइमिंग यही है सर। तो आपको हम कम्युनिकेट कर देंगे और प्रेस रिलीज प्लस फोटोज़ जो आज जो सुबह के हुए या शाम में भी जो फोटोज होते हैं वो आपको हम मेल कर देंगे सर, या व्हाट्सएप कर देंगे? कर सकते हैं, मेल आईडी भी लिखी है, व्हाट्सएप हो जाइए। हाँ अभी 5 मिनट का ब्रेक है, 5 मिनट का ब्रेक। ये भी आपके लिए बैठिए। हाँ जरूर, बाहर पेंटिंग कॉम्पिटिशन चल रहा था, वो भी हमें We will continue our program soon. Everybody is requested to settle down fast. Poetry participants are requested to come at the backstage. Poetry participants are requested to come at the backstage.
Everybody is requested to gather in Crown Hall. महाभारत का एक ऐसा अध्याय जो आज के युग में भी दोहराया जा रहा है। द्रौपदी चीर का सीन थोड़े मैं डांस के ऑडिशन में सिलेक्ट और मैं कल घर आ रहा हूँ। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? पापा पापा पापा। हेलो पवन, मैं डॉक्टर आनंद बोल रहा हूँ। जल्दी है ना, फालतू का शॉट मत लेना।
कैप्शन टाइप का लगा दीजिएगा 130 से पर नहीं शुरू हुआ May we request everyone to kindly wear a mask in accordance with COVID-19 protocol. आपसे अनुरोध है कि कोविड को ध्यान में रखते हुए मास्क का प्रयोग जरूर करें। हेलो सर आपको फूड मिला इतना सारा फिलर डाउनलोड किया Request everyone to kindly assemble fast in Kalam Hall. We request all the participants and attendees to kindly assemble in Kalam Hall as soon as possible. हमारे पार्टिसिपेंट्स से अनुरोध है कि वो कलाम हॉल में आने का कष्ट करें। We request you all to put on your masks in accordance with COVID-19 protocol. हुस्न वालों को संवरने की जरूरत क्या है? हुस्न वालों को संवरने की जरूरत क्या है? वो तो सादगी में भी कयामत की अदा रखते हैं। नहीं यार, try something energetic. एनर्जेटिक्स तो ये सुनो, एक उम्र के बिछड़ों का पता पूछते हो, एक उम्र के बिछड़ों का, आजकल लव स्टोरीज लोग ज्यादा लिखते हैं, लव पोम्स ज्यादा लिखते हैं, तो उस पे है कि एक उम्र के बिछड़ों का पता पूछते हो, यहाँ दो रोज खून के रिश्ते नहीं चलते।
एक उम्र के बिछड़ों का तुम पता पूछते हो, यहाँ 2 रोज खून के रिश्ते नहीं चलते, और लिखने के लिए कौम का दर्द काफी है। अब शायरी में महबूब के नखरे नहीं चलते। ये हुई ना बात। We have with us Mr. Sanjay Kumar Kundan, former Deputy Director, Department of Education, the Government of Bihar. He is a well-known poet, author, translator, and social activist. There are 4 books to his credits. एक लड़का मिलने आता है, तुम्हें क्या बेकरारी है, भले तुम और भी नाराज हो जाओ. Dr. Kumal Vimlendu Singh is a noted name in the academic and literary world of present times. Awards like OIL Rajbhasha Samman, Magad Sahitya Shri add rich hues to his multi-talented personality. His writings in Hindi and English is appreciated across the globe. We have with us Dr. Kumar Varun, Assistant Professor and Head of Department Hindi at Prabhunath College, Parsa, Academic Counselor at IGNOU and BN College, Member of Editorial Board, International Journal of Literature, Arts, Science Publishing Group, USA. May we now request Mr. Tapeshwar Prasad, nationally renowned poet and graphic designer, to felicitate our judges for poetry competition. Thank you, everyone. We are ready for the show to begin. So please welcome the first finalist of poetry competition, PY02, with a huge round of applause. The code is PY02. हेलो, जहाँ चलना सीखा हमने या जहाँ कुछ बनना सीखा हमने, बात उस घर की करते हैं। दिलों की मोहब्बतों की बातें तो होती ही रहेगी। चलिए बात आज अपने शहर की करते हैं। हमारा शहर धनबाद कि दियों में मोमबत्तियों में नमाजों में जीती हूँ, कि दियों में मोमबत्तियों में नमाजों में जीती हूँ, अजब रस्म अजब रिवाजों में जीती हूँ। जनाब, मैं शहर की बंदी हूँ, बंद दरवाजों में जीती हूँ। मुझे लगा कि हर रात अपने बिस्तर में सिमट जाना, सुबह होते ही उन्हीं बिस्तरों से निकल जाना, उसके लिए कितना लाजमी है। तो क्यों ना आज उस पर लिखा जाए जो इस शहर का आदमी है। यही सोचकर घर जाने की राह चुनी मैंने, तभी अचानक एक आवाज सुनी मैंने। आवाज ने कहा मुझसे कि उपासना, लहरों से नज़में चुराती हो, कभी हकीकत का ताना तो बुन लो, और मेरी कहानी भी किसी नज़्म से कम नहीं, ये नजराना तो सुन लो। मैंने कहा, ये कौन है जो नजर तो नहीं आ रहा पर बोल रहा है। तो आवाज ने कहा मुझसे, न मालूम कितने पंछियों का हौसला बसर हूं मैं, तुम्हारे कलम से लिखे किताब के असर का हुनर हूं मैं। जिनका आसमां है नहीं भी है, उनका घर हूं, छत हूं मैं। तुम मुझे हर रोज देखकर अनदेखा करती हो ना, तो सुनो आज बोल रहा हूं, धनबाद शहर हूं मैं। कि शक्ति मंदिर की घंटियों और आरतियों से होती जिसके सुबह की पहचान है, स्टेशन वाले बड़े मस्जिद के नमाजों से होती जिसकी शाम है। साल दर साल पहचान बदली मेरी, पहले मैं बिहार में था, फिर झारखंड में हुआ, अब कोयले की खान शहर धनबाद मेरा नाम है। तुम कहती थी ना कि ख्वाबों को हकीकत की फ्रेम में लाना है, अपने लिए नहीं, अब अपनों के लिए कुछ बनकर दिखलाना है। तो बताओ
अपनी कही बातों से कोई मुकरता है क्या? अपनों के साथ भला कोई ऐसा करता है क्या कि मेरी जमीन के हर जर्रे पे झुग्गियों का, बस्तियों का मेला किया है तुमने, पर मेरी दामोदर नदी को नाला बनाकर मेरी रूह और सांस तक को मैला किया है तुमने। कि ये रास्ते तुम्हें घर तक ले जाते हैं, कि ये रास्ते तुम्हें घर तक ले जाते हैं। कभी सोचा इन पर थूकने से पहले, अरे मैं सांस कैसे लूंगा मेरे जंगलों को फूकने से पहले? मेरे बारे में ये मशहूर था कि वक्त के साथ, मौसम के साथ समा बदलता हूँ, पर अब तो दिल में सुराख हो गया है, धुआं निकलता हूँ, धुआं निकलता हूँ। इससे पहले कि मैं बर्बाद हो जाऊं, संभाल लो मुझे, क्योंकि झाड़ियों की पैदाइश हूँ, झाड़ियों में ही दफन ना हो जाऊं। मैं जिनका आशिया हूँ, उनके लिए ही कफन ना हो जाऊं। ये आने वाला वक्त, ये आने वाले लोग, ये आने वाली नई पीढ़ियां कहीं मुझे याद ना करे बिछड़े यारों की तरह, और कहीं मैं तुम्हारे किताबों में कैद ना हो जाऊं मोहनजोदारो की तरह। खैर, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हौसला अफजाई करने आए हैं, क्योंकि खुली आंखों से ख्वाब बुनने वाले कहाँ मिलते हैं। हम माना कि गुलशन में फूल तो बहुत हैं, पर कांटे चुनने वाले कहाँ मिलते हैं। और जनाब, इस शहर को आदत है, यहाँ लोग अपनी नहीं सुनते, वहाँ हम जैसे कलाकारों को सुनने वाले कहाँ मिलते हैं। शुक्रिया। धन्यवाद उपासना। किसी ने क्या खूब कहा है कि ये रास्ते ले ही जाएंगे मंजिल तक, जरा सब्र रख। ये रास्ते ले ही जाएंगी मंजिल तक, जरा सब्र रख। कभी सुना है कि अंधेरे ने उजाला नहीं होने दिया? With this course, I would like to invite PY64 on the stage. PY64 on the stage. Thank you. Good afternoon to everyone present here. A little context about my poem. I wrote this as a dramatic monologue, as a homage to my muse, Anne Boleyn, the second wife of Henry VIII, the reason for the disintegration of the Church of England from the Catholic Church. So I thought this context would be of a little help. I wrote this. This is a few moments before our beheading. Oh, death, rock me to sleep, I write. I, the anointed Queen of England, wife of a tyrant, prisoner in my own castle, delinquent of witchcraft, guilty of ensnaring the great monarch. Does the rumor really lingers? I swear to the saints I do not have 6 fingers. Though I did betray the Spanish queen, never for once took joy in the yellow morning. My king, my lord, I love you with all my heart, but your eyes have already wandered. I was once Jane, I remember? You were so fond of my wit, my knowledge. You wrote me letters for countless days for my French ways. I cannot believe your affection now astounds me. Your heartlessness, your cruelty, your faithful loyalty. You are ready to behead England's whore, a woman you were ready to move heaven and earth for. The most desirable woman in the court of England, now weeps in this cold dungeon. Men have always been unkind to girls. My own dear father tossed me around the world. Lady in waiting, maid of honor, wicked queen, consort of the monarch. Look at that pretty girl. Oh, there goes the wicked pretty girl. Intelligent, beautiful, oh, so charming. But to get rid of the Vatican, that takes an insatiable king. Let's not dwell upon the past. I do not blame another soul at last. My Lord calls me to him, I hear the Jerusalem bell rings. Death to the witch, the kingdom sings. Sharpened sword, few practice swings. May God save my beloved king. Thank you.
Thank you. Our next contestant is PY19. The code is PY19. A very warm good afternoon to one and all present over here. My poem is dedicated to a person who is and will always be the closest to my heart. The title of my poem is Lost. The night felt darker by every passing moment. The light fading away like our memories of togetherness. The breeze piercing his hoodie, which I had so lovingly embraced over myself. Clutching it closer to my heart, I rubbed my arms across my chest. I wanted to hold the breeze, to hold and capture the winds that carried your essence, and to log the memories of your presence. As I sat on the same bench along the same road, glimpses of our last walk overboard. Drenched in memories, I picture you by my side. And then the memories of those days when you were mine. Oh, those days of beautiful sunshine. The days when my baby hands would clasp your pointer finger in that perfect grip. That last walk with you, dear Dad. Dear Dad, I miss the way I would delicately coil myself on your lap, the way I would playfully toy your Raga watch. The Raga watch, you see, my dad was definitely a cool chap. Recollecting these memories of all the past days, this makes me smile, and at the same time, I stand here with teary eyes. I still stand at the balcony at sharp 7 p.m., waiting for you at the apartment gate. There's no one honking at the doors, no one to pull down the window pane. You don't wave back at me anymore. With the smile that I so strongly crave. As I rush down the stairs sometimes, you aren't there. You aren't there. You aren't there to hand me your lunch bag, to lift me up or hug me tight. And then I walk back home with teary eyes. It's been over half a decade since you left. Yet I still await your return with the same zest, despite being aware of the fact that I cannot get you back. This little daughter awaits her lost dad. Thank you. Thank you. Now let's welcome PY55. I repeat, let's welcome PY55. कामयाबी कोई नहीं देखता, कामयाबी कोई नहीं देखता, खामियां सब मशहूर कर देते हैं। बदलना कौन चाहता है दोस्तों, बदलना कौन चाहता है दोस्तों? वो तो कुछ लोग हैं, कुछ हालात हैं जो बदलने पर मजबूर कर देते हैं, जो बदलने पर मजबूर कर देते हैं। A very good afternoon, one and all. You know, we all have certain people, certain situations in our life that force us to change. Even I have had people saying, अच्छा, आप UPSC निकालेंगे? देखते हैं, अरे ना शक्ल है, ना अक्ल है, तुम ही बताओ तुमसे क्या होगा? There, this sympathy did hurt me earlier. But now when I'm used to it, let me reply to those people that I have changed for good. And no more for yours, but for myself. Look into my eyes, look into my pain.
Look into the fire and in the stormy rain. I have been a queen now, living in my own royal grange. Come on, let me show you, my friend, why I had to change. Why I had to change. You taunted me. You haunted me. You made me to believe in pain. You took me to, you shook me to. Yes, you made an easygoing, simple human to change. You made a simple person to change. And see, your words did affect me. The tearful eyes now don't cry, the fake smile always sigh, the lazy hands now no more stop, and the tired legs continue to walk. Yes, the horrified mind does no more wonder in the lucid dream, you remember? I assure you, will now no more surrender, will now no more surrender. The bladder sky tongue will not beckon the melting heart. Stoned now, will not break, will not break. The pin brain has now enough space and the turtle-paced life is now ready to race, is now ready to race. I sing from my heartaches, I sing from my pains, I sing the message through the veins. I am the moon, fallen on your wilted grass, and my beauty are those hated scars which you haunted and you taunted and you made me to believe in pain. Yes, it's you who made me to change. Yes, it's you who made me to change. And now, this is what I have been, and my future is what my past has unseen. Hark! Yes, you who has thrown me! You remember that green baby plant? You remember that green baby plant which you wrenched and you crushed? Yes, it's now a grown tree. Yes, it's now a changed me. Yes, it's now a changed me. Thank you all, thank you very much. But also remember, आपको गिराया जाएगा, नीचा दिखाया जाएगा, अरे उड़ोगे तो पंख भी काटा जाएगा. पर याद रखना, तुम वीर हो, खुद से लड़ो, तुम आग हो, खुद से जलो. बहुत नीच है गिराने को हर पल, बहुत नीच है गिराने को हर पल. तुम नर हो, गिर के उठो, तुम नर हो, गिर के उठो. Thank you very much. काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए. यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है जनाब, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है जनाब, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए. बिल्कुल, और क्या शानदार प्रस्तुति थी पोएट्री कंपटीशन में. सभी को हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है. वो छोड़ो, पैनल डिस्कशन सुनकर तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आता है? यार गाने पे डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन पैनल डिस्कशन सुनकर पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, एजुकेशन. Okay, then I have a surprise for you. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause and welcome Xavier Theatre Club with a panel discussion on the topic Hollywood versus Bollywood. Good morning, ladies and gentlemen. I think it's afternoon, sorry. Good afternoon, ladies and gentlemen. Today, we bring to you this very boring and cliched panel discussion where we will be critically analyzing Hollywood and Bollywood. अरे ये क्या बोल रही है? रुकिए जरा, सब्र करिए. आप ही के भाषा में समझाते हैं. Let her speak, ma'am. बोलने दीजिए मैम. देखिए, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे. फालतू की बकवास करेंगे दो लोग. हॉलीवुड से पता नहीं कौन आई है और बॉलीवुड से ना जाने कौन आए हैं. तो इससे पहले कि आप लोग और ज़्यादा बोर हो, चलिए आपको और ज़्यादा पकाया जाए. मैम, कुछ बोलना चाहेंगी आप हॉलीवुड के बारे में? You know, we Hollywood have Michael Jackson. हाँ, तो हमारे बॉलीवुड में भी तो है प्रभु देवा. मुकाबला मुकाबला लला ओ लला.
Then we have Angelina Jolie. माधुरी दीक्षित को तो लगता भूल गई. Then you forget about Scarlett Johansson. ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी. ओ बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी. Then we have Jonas Brothers. I'm a sucker for you. उसकी बीवी को तो जानते हैं, प्रियंका चोपड़ा. जोनस. खैर, इससे पहले कि ये लोग और वायलेंट हो जाएं, दिस इज अ पैनल डिस्कशन, सो प्लीज टेक योर सीट सर, प्लीज टेक योर सीट मैम. काफी वायलेंस होने वाला है यहाँ पे, तो मैं पहले ही बता दूं, बॉलीवुड के पास जहाँ अमिताभ बच्चन है, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है. पैनल डिस्कशन. वहीं हॉलीवुड के पास कौन है मैम, आप बताइए. लियोनार्डो डी कैप्रियो है. Every night in my dream, I see you, I feel you. This is how I know you. Go on. सोलो सिंगिंग खत्म हो चुका है, पैनल डिस्कशन है. हमारे बॉलीवुड के पास लेकिन शाहरुख खान भी है. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम. Oh Maku, Turulab. आपको भी कुछ होता है ना मैम? नहीं होता है. सर आपको कुछ बोलना है और? फिल्में सिर्फ 3 चीजों से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट. Then I guess you haven't heard this. Are you lost, baby girl? And one more. How you doing? जोई ट्रिपियानी. लेकिन इस क्राउड के लिए आई थिंक ये सूटेबल नहीं है मैम. तो चलिए बढ़ते हैं अब स्टोरी लाइन पे. किसकी स्टोरी लाइन ज्यादा अच्छी होती है? You know, we Hollywood have Avatar, Nebula, Avengers. हाँ तो हमारे बॉलीवुड में भी तो है जादू. Yes, I know. वो नीला छोटा खजूर तुम लोग सस्ते VFX ला करके नकली स्पेसशिप बनाते हो. Yeah, I know. तुम्हारे पास तो साइंस का S भी नहीं है. हाँ तो हमारे पास माँ भी है. जब जब माँ पुकारती है, मेरे कर नर्जुन आएंगे, मेरे कर नर्जुन आएंगे, मेरे कर नर्जुन आएंगे. सर झाड़ू लगाना पड़ेगा वापस से, आप प्लीज बैठ जाइए. हाँ स्टोरी लाइन भी हो गया. Okay, wait, ma'am. There is one more thing. मुझे पता नहीं है आखिर तुम बॉलीवुड के लोग इतने मोटे घड़ी पहनते क्यों हो? स्मार्ट वॉचेस नहीं है क्या? अरे आप लोग क्या जाने इस घड़ी की कीमत. इसमें वो फंसता है. क्या फंसता है? दुपट्टा. ठीक है, इससे पहले कि ये लोग मुझे और इंटरप्ट करें, मेरे फेवरेट पार्ट पे आते हैं. किसके सॉन्ग ज्यादा अच्छे होते हैं? बॉलीवुड के होते हैं, पता नहीं है? गाकर सुनाओ. तेरे जैसा यार कहाँ, एवरीबॉडी, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना. तो आप लोगों ने फ्रेंड्स तो सुना ही होगा. I'll be there for you, like I've been there before. I'll be there for you, 'cause you're there for me too. क्या क्या बोलते रहती है बॉलीवुड का गाना. हर घड़ी बदल रही है धूप, जिंदगी छाँव है, कभी कभी है धूप जिंदगी. हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो. I guess then you haven't heard Ed Sheeran. Dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this, darling. You look perfect tonight. अंग्रेजी वाली मैडम,
सबर कीजिए, अभी गाना सुनिए। एक हो गए हम और तुम, हम फिर उड़ गई नींद रे हम्मा। सर प्लीज बैठ जाइए। अरे मैम। Wait, ma'am. Why in hurry? Havana, ooh na na. Half of my heart is in Havana, ooh na na. He took me back to East Atlanta, na na na. Oh, my heart is in Havana, my heart is in Havana, Havana, ooh na na. ये कौन सा गाना है? हवा आना उलाला? तुम नहीं समझोगे. As you know, we Hollywood are very classic. अच्छा, क्लासिक। देखिए, ये पैनल डिस्कशन तो सोलो सिंगिंग से भी ज़्यादा वायलेंट हो गया है। और इससे पहले कि लोग मुझे और इंटरप्ट करें, मैं पहले ही बता दूं, मैं न्यूट्रल पार्टी से हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा कॉस्ट्यूम पहन के आना पड़ा है यहाँ पे। आधा बॉलीवुड बना है, आधा हॉलीवुड बना है। मैं अब और नहीं झेल सकती, आप लोग का नहीं पता, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। भाई आप लोग अपना देखिए। हॉलीवुड जिंदाबाद, बॉलीवुड जिंदाबाद। That was really nice. Thank you, Xavier Theatre Club. Now we have another surprise for you. So, ladies and gentlemen, please welcome from BMC2 Maihar Narayan with a rap performance. क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग? बहुत सन्नाटा है यार, इतना शांत पसंद नहीं आ रहा है कुछ। थोड़ा शाउट आउट दो भाई सभी लोग, जितने लोग यहाँ पे हैं। या अब स्टार्ट करते हैं। वेरी ब्रो। सो ये गाना इंट्रोडक्शन है मेरा। चल चल लड़का बिहार का मैं, जिला मेरा पटना, राबी सीट में आया पर गया सबको हटना। फ्लो मेरा सुन कितनी हुई दुर्घटना, फेक बंदे मुझसे चाहे ना सटना। लिखाई मेरी आग में रैप जैसे ज्वाला, बजे में रैप सॉन्ग्स तू काय को जता लाला। जितनी थी गालियां सारी बनी गालियां, गब्बर मैं हूं तो तू मेरा कालिया। हिप हॉप सीन का तू तो विजय मालिया, ये ब्रो हाय ब्रो करके सबको बना लिया। इंग्लिश में दी थी तुमने 3-4 गालियां, ये सब करके साबित क्या करा लिया। फेक बोली सुन सारे हुए बहुत चक्का, पर तेरी हर बॉल पे गेंद मैंने मारा छक्का। असली रह तू तेरा साथ मेरा वादा पक्का, एक ऐसे सुझाव तुझे घर जाके खा मक्का। राफी तो कॉलेज में तू है अभी एलिमेंट्री स्कूल, तो पीछे डाल के बेटे बनेगा ना ही कूल। लिरिक्स में डोमिनेट करूं मैं, मेरा यही रूल। शोर सुन ले लेकर बैठा बेटे वही स्टूल। हाई फाई तू है मैं स्ट्रीट लेवल माफिया, रैपिंग के थ्रू जो चाहा मैंने पा लिया। शब्दों से खेलूं ईमान ना मैं बेचता, 8वीं में मेरे अंदर आया पेच था। रैप है मेरे अपने ना किसी के चेपता, शुरू से असली न बनना मुझे फेक था। अपने तवे पे अपनी रोटियां में सेकता, क्या अपनी रोटियां में सेकता। लड़का बिहार का मैं, जिला मेरा पटना। लड़का बिहार का मैं, जिला मेरा पटना। लड़का बिहार का मैं, जिला मेरा पटना। क्या क्या जिला मेरा पटना। फ्लो है स्लो पर लिरिक्स मेरे जानदार, तभी तो इस गाने का नाम दे शानदार। शब्द न टूटे मेरे शब्द आए लगातार, शब्दों का मेरे अंडर बड़ा भंडार। जिनको है शक मेरे गाने करते उन पे वार, बीट को मैं किल करूं सारे सुने बार बार। गली का बंदा ना मैं फिर भी देख बहुत हार्ड, क्या क्या बहुत हार्ड। हाँ लड़का बिहार का मैं, जिला मेरा पटना। लड़का बिहार का मैं, जिला मेरा पटना। लड़का बिहार का मैं, जिला मेरा पटना। क्या क्या जिला मेरा पटना। प्यार शहर से ये गलियां मेरी महबूबा, ये लंडी वाइन की पर रैपिंग का मैं शहंशाह। आजकल के रैपर अब होते मुझसे सहना, सच में बोलूं कि तुमों को लगे ये जहर। बड़ों की बात सुन अभी बेटे वही ठहर, टीजर है ये अभी बचा हुआ पूरा पहर। राइम जब करने बैठूं सुने मुझे सारा शहर, क्या क्या सारा शहर। हाँ लड़का बिहार का मैं, जिला मेरा पटना। लड़का बिहार का मैं, जिला मेरा पटना। लड़का बिहार का मैं, जिला मेरा पटना। क्या क्या जिला मेरा पटना। क्यों क्यों। और एक चीज और, सारे यहाँ पे तो पटना नहीं है तो सारे पटना के हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं बोलूंगा लड़का बिहार का मैं, जिला मेरा, सारे बोलेगा पटना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चेक चेक लो। लड़का बिहार का मैं, जिला मेरा। लड़का बिहार का मैं, जिला मेरा। लड़का बिहार का मैं, जिला मेरा।
लड़का बिहार का मैं जिला मेरा Yo, thank you so much. So, next track पे चलते हैं क्या? Yo. चलो भाई तो दूसरे गाने की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है? हाँ हाँ check check jump jump देखो यार प्यार तो सभी लोग करते हैं पर पता है यार बैग लेकर बैग नहीं करना चाहिए किसी के साथ में so yo never back to be love में जब भी मैं बात भी बोलूं सारी देख सच है धरती पर शेर में पानी में मगरमच्छ में गाने पे गाने सभी में अलग टच है जहां भी जाऊं वहां पे थोड़ा फील ले लूं हाथों में माइक दे वहां का पूरा सीन ले लूं बैक टू बैक भाई थोड़ा अफीम ले लूं हाय हूँ भाई कहां पे बोल जमीन ले लूं नकली लोगों की खरे खरे मैं जमीन ले लूं रैपर से बहुत सारे भाई तेरा औसम है गाने बज रहे देख बदला मौसम है गर्मी है चारों ओर स्प्रेड कर रहा लावा में बंदी तेरी पहेली उसको सुल जावा में नशे शिकांड कितने होगी भूल जावा में जिंदगी वास्तव और संजू बाबा में अभी तो पहला वर्ष कैसे रुक जावा में हाँ कहते सीधेंगे मेरा साथ तो है कितने न जाने कितनी बारी कल मैंने जंग जीते लगते सी मैंने हूं कहने क्या वह जीते क्या 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 वह जीते यो मैं कहना ठीक है कल्ला बंदा वीकना पर हट मेरे तू मेरे ना करीबा जेब च मैं पर दिल का तू गरीब है क्या क्या दिल का तू गरीब है Standing out, 1, 3. Thank you, thank you. अभी मेरा यहाँ बहुत ठंडा माहौल चल रहा है, ठीक है? तो मजा नहीं आ रहा है परफॉर्म करने में आपको प्लीज आप लोग थोड़ा एक्साइटमेंट दिला दो, ठीक है? तो बस यही जोश मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है? यही जोश। चलो भाई, तीसरा गाना प्ले करते हैं हम लोग, ठीक है? वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा दे देना आपको, ठीक है? हाँ check, check, check. सी जवानी बातचीत मेरी बातों में मेरे गाने बैठे जाके सबकी यादों में लड़का बिहार पे सबको नचा डाला हिंदी में रैप कर रहा मैं करता घोड़ा काला रातों को गाने लिखता नींद अपनी भूल कर हाथों में गॉटलेट चुटकी में सबको धूल कर अभी हूँ बाहर कल मिलना मुझे नाश्ते पे आगे बढ़ रहा मैं अपने सीधे रास्ते पे मेरा नाम सुन फेक बंदे घास देते जिनसे खाली ने तू वो आके हमसे घास लेते कभी न रूका झूका टूटा पर मैं फिर खड़ा गुस्से में रूठा उठा एक बार देख मैं फिर लड़ा मन की आवाज फिर आगे देख मैं फिर बढ़ा कुछ को मैं लगता पागल कुछ को लगता सिर चढ़ा Xavier 101% मैं बात करूं जितने हैं मेरे गुरु सबको मैं याद करूं Demons के voices मुझे आ रहे हैं That's why I'm going higher man I'm drunk on this prison check RIP टूपक अंडरग्राउंड वाली बात करूं बातचीत देख जैसे मैं राज करूं राइम जब करने बैठूं फिर ना मैं सांस भरूं शब्द मेरे खत्म होने का नाम ले वर्णमाला रखी मैंने दिमाग में मुझसे फिरेगा जैसे आग में तू हाथ दे सच्चाई हकीकत दो शब्द एक ही बात है सबको नीचा दिखाना तेरी क्या औकात है VW 9000 में घूमो दिन और रात में गाने बनाता क्योंकि हिप हॉप मेरी साथ है क्या क्या हिप हॉप मेरी साथ है हाँ हाँ हिप हॉप मेरी साथ है थैंक यू गाइस थैंक यू यार बहुत ठंडा है यार आप लोग अच्छा बात गुची गैंग कितना लोग यहाँ पे सुना है गुची गैंग गिव मी अ शाउट आउट मैन कितने लोग यहाँ पे गुची गैंग सुन रखा है बहुत कम चलो ठीक है आज गुची गैंग सुनना है लोग विद अनदर ट्विस्ट ठीक है चलो सो लेट्स प्ले आज गुची गैंग को एक गाना है मेरा GTA बिहार ठीक है उसको हम लोग करेंगे इस पर जाओ जाओ हाँ बिहार को फीवर्स यार पटना के लड़का रिप्रेजेंटिंग बिहार मेरे शब्द है बहार उनसे करूं मैं प्रहार मैंने गाने सुन 4 से रैपर्स मेरी पर गाना ड्रॉप किया मैंने पूरा सीन से लिया आज हो जाना सवार मेरी जीटी पे लाइफस्टाइल मेरी देख जैसे ड्रीम है मैं तू बाक वाला मेरे अंदर डीए में गोला रोड में थक्स वाला सीन है पे बैक बैंग यहां क्रॉस करे दिन में ए दफन की तरह रास मेरे सीने में सिक्सा मेरे हाथों में मीनू पे अंडरग्राउंड वाली बातचीत सीन में व्हाट्स प्ले मेरे देख जैसे कॉस्मिक रे जैसे डामा मैं कर रहा नॉन जॉब स्किल मेरे शब्द खत्म मेरे लूप में हूँ मैं गाने लिखूं बिना मेरे
मेरे हुक्के में आए तेरी मंदी देखी मुझे छुपके में आए गानों पे ट्रिप करनी लुक्स मुझे दे ओजी में बात बोल वही खड़े रे कोरोना बीमारी तो दूर से ही है शुरू हो जा छोटे वरना स्टार्ट करो स्ले yo start करो स्ले क्या स्टार्ट करो स्ले जीते बिहार हाँ जीते बिहार yo जीते बिहार check जीते बिहार thank you चलो भाई सारे आने हो गए अब आखिरी गाना करते हैं ठीक है सो इस गाने में ना सबको साथ में मतलब शायर आउट देने रहना है थ्रू आउट द सॉन्ग आप लोग सारे लोग मतलब जोश में रहोगे ऐसे आप लोग बीच में ठंडे पड़ जाते हो ठीक है चलो भाई स्टार्ट करते हैं ब्रो check It's your boy, that T-Man. जागा हूँ रात से मैं पहने मेरे हाथ में लीनी पारा जाने कैसे जैसे बात मेरे और ऑफ ट्रैक काफी फिट से मैं पड़ा हुआ न जाने कितने लोगों को लगा ये लड़का गया मैं वापस काफी करनी है चीर पार टाइम खत्म नहीं अभी तो हुई है शुरुआत TNT मेरा फ्लो देख बूम बम किक नहीं पर सारे कर रहे ब्रो डाउन माइक मेरे हाथों में मैं कर दूं तेरा शो डाउन सुन मेरा फ्लो सारे बंदे बोले स्लो डाउन पास पे पास करो स्पिट बना तू क्लाउड पटना का लड़का welcome to my G-town smoking J's I'm feeling like a King Kong tripping with my homies waiting for my next round all those talking shit they just wanna pull down temper high मेरा भाई लोग बोले cool down जाने दे सारे बच्चे हैं बख्श जान राइम जब मेरे बजे सारे सुने खोले कान क्या सारे सुने खोले कान हाँ सारे सुने खोले कान जागा हूँ check जागा हूँ रात से मैं पहने मेरे हाथ में लीनी पारा जाने कैसे जैसे बात मेरे जागा हूँ रात से मैं पहने मेरे हाथ में लीनी पारा जाने कैसे जैसे बात मेरे चलो अब थोड़े टाइम पीछे उठाता अपनी आंखें नीचे लगा टैलेंट खत्म अब खड़ जाओ सबसे पीछे कैसे करूँगा सीन इतने लोगों के नीचे तभी तो ड्रॉप किया गाना थोड़ा चोट सा लोगों को पसंद आया दिखा मुझे होता धीरे धीरे रैपरों में बन रहा टॉप सा भाइयों के लिए तुझे थोड़ा शौक था वरना तो फिर लागे भाई तेरा रॉक सा गाड़ी लेनी है जीटी वाली भाइयों फोर्ट का आज पिला दे भाई इसकी नहीं फोर्ट का 200 kmph स्पीड मेरी फोर्ट का स्पीकर में गाने बजे सुन पूरा कोट सा MONTY नाम मेरा कर रहा फ्लोर ना टूटे जैसे अरबी घोड़ा रेस का क्या अरबी घोड़ा रेस का मैं जगा हूँ रात से मैं पहने मेरे हाथ में लिख नहीं पा रहा जाने कैसे जैसे बात मेरे जगा हूँ रात से मैं पहने मेरे हाथ में लिख नहीं पा रहा जाने कैसे जैसे बात मेरे saying y'all want to in the house baby thank you so much guys thank you that's it चलो भाई thank you Thank you, Mayur, for this amazing, energetic performance. 1 2 3 4 अरे ताली तो बजा लो Ladies and gentlemen, give a huge round of applause for Mayur Narayan. अरे यूपी वाला ठुमका लगाओ यूपी वाला ठुमका लगाओ यार देखो ये मालूम था कि ये आएगा कि लगाइए हालांकि ना मैं ठुमका लगा सकता हूँ ना हीरो जैसा नाच सकता हूँ तो ये काम उन्हीं पे छोड़ देते हैं जिन्हें जचता है और जिन्हें अच्छा लगता है और जो कर पाते हैं हाँ तो चूंकि ये हमसे होने नहीं वाला तो ये हमारे आज के डांसिंग कॉन्टेस्टेंट्स के लिए छोड़ते हैं Okay, so before that, let me introduce you to our judges for the dance competition. We have with us Mr. Samrat Adya, a versatile artist and well-known instructor of national level Indian classical dance, Kathak, Bharatanatyam, Odissi, Manipuri. Sir, at present, you are at East Central Railway's Sonpur division, and through your dance, you have represented the same, and also in drama, acting, and painting. We also have Chumki Das, fitness specialist and Al Incent, Zumba instructor at Patna. She is successful
virtual event organizer who has organized more than 1,000 events related to fitness, health, and many other creative activities. May we request Professor C.S. Dr. Mala Kumari Upadhyay to felicitate our judges. लॉक कर दिया मैंने Thank you, ma'am. We also have with us Dr. Pallavi Vishwas, कथक नृत्यांगना शास्त्रीय व उपशास्त्रीय गायिका। आज आप पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में उप प्राचार्य हैं। आपकी दो काव्य संग्रह हिंदी के पाठकों में काफ़ी लोकप्रिय हैं तथा आपने डॉक्टर नरेंद्र पाल मोहिनी द्वारा लिखित संपादन भी किया है। May we now request Professor Dr. Niharika Kumari to felicitate our judges for solo dance. Ladies and gentlemen, give a huge round of applause. Thank you, ma'am. So, put your hands together for our very first dance performer, SD54. I repeat, SD54. Please give a huge round of applause. हेलो पापा, मैं डांस के ऑडिशन में सिलेक्ट हो गया हूँ और मैं कल घर आ रहा हूँ। पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? पापा, पापा, पापा। हेलो पवन, मैं डॉक्टर आनंद बोल रहा हूँ। आपके पापा को कोविड होने की वजह से उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके राह दिखाता है। भी खोला मुझे घर बुलाता है। हमारे सभी यात्रियों से अनुरोध किया जाता है कि लॉकडाउन के कारण आने वाली सभी ट्रेनें रद्द की जाएंगी। मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। हेलो डॉक्टर, मुझे एक बार मेरे पापा से बात करवा दो। सॉरी पवन, अब आपके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। जान दिल को बेजान अगर मिले खुदा को, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में।
तड़प तड़प What an amazing performance, I must say. आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा? Let's welcome code number SD35 on the stage. I repeat, SD35 on the stage. मेरी नींदों की ख्वाबों की है कसम तो आजा ओ मेरी तेरी आंखों में देख के तेरी बाहों में झूम के मैं तेरे हाथों को चूम के तेरी जुल्फों को छेड़ के तेरे रूप की नूर की है कसम तो राजा ओ मेरी जान ओ मेरी इस रात को थाम लो सारी घड़ियां तोड़ दो ना इस चाँद को बांध लो चढ़ते सूरज को रोक लो इस चांदनी रात की एक कसम तो ओ मेरी जान आंसुओं की दुआओं में अपने सर को झुका के मैं तो दोनों हाथों को जोड़ के तुझे मांगा है रब से मेरे सजदों की दुआओं की है कसम तो राजा ओ मेरी जान Now, originality. क्या बात है? Thank you. Next we have is SD47. The code is SD47. Give a huge round of applause, everyone.
मेरे साथ अखियां ना गोरी चल तू ये रात अखियां ना गोरी तेरा मेरा सारी रात नींद आवे तैनू बड़ा तड़पावे दिल चैन कहीं ना पावे 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 लगती लाहौर दिया जिसे हिसाब ना रख दिया ओ लगती पंजाब दिया जिसे हिसाब ना रख दिया कोई ना पता करो पता करो पता करो That was amazing. Next we have is our contestant number SD20. I repeat, the code is SD20. गुड आफ्टरनून एवरीवन प्रेजेंट हियर और मेरा चरण स्पर्श गणमान्य अतिथि के लिए। महाभारत काल में नारी अस्मिता को बचाने के लिए उसके करुण पुकार पर श्री कृष्ण को आना पड़ा। वर्तमान काल में भी हम कथित रूप से शिक्षित और आधुनिक कहलाते हैं, परंतु आज भी जो नारी अपने घर में तो बेबाक और स्वतंत्र रूप से सुरक्षित रहती हैं, पर क्या वो घर की दहलीज पर बाहर निकलने के बाद उतनी ही सुरक्षिता और स्वतंत्रता का एहसास कर पाती हैं? क्या आज भी समाज उसे वह सुरक्षा या सुरक्षा का एहसास देने में समर्थ है, या आज भी उसे किसी कृष्ण की इंतजार में ही इस नियति का ही बोझ लेकर चलना होगा? Today I am going to present my dance on this theme. Thank you. महाभारत महाभारत का एक ऐसा अध्याय जो आज के युग में भी दोहराया जा रहा है। द्रौपदी चीरहरण जगत सुंदरी द्रौपदी क्रूरता की मिसाल दुर्योधन पांडवों, अब तो तुम अपना राज और ताज भी हार गए हो। बताओ अब क्या लगाओगे दांव पर? अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। हम ये खेल यही समाप्त करते हैं। असंभव! एक अनमोल हीरा अभी भी तुम्हारे पास है, पांचाली द्रौपदी। जीतम जीतम जीतम। जाओ दुशासन, द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में ले आओ।
देशस्य रहस्यं जागृतं इदम् अभिमन्युस्थितो गर्भे दिव्यज्ञानयुतो शृणु रहस्यं चक्रव्यूहस्य सम्पूर्णं न स ज्ञातवान् भगवान श्री कृष्ण ने तो द्रौपदी की लाज बढ़ाई, पर लगता है उन्हें इस युग में एक बार फिर जन्म लेना होगा। What a powerful performance. Ladies and gentlemen, please welcome SD'23 on the stage. We repeat, please welcome SD'23 on the stage. हाँ सजदे में हमने मांगा था उम्र भी हमारी लगे जाए तुमको खुद से ही दावा करते थे नजर ना हमारी लग जाए तुमको सजदे में हमने मांगा था उम्र भी हमारी लग जाए तुमको खुद से ही दावा करते थे नजर ना हमारी लग जाए तुमको हम तुम्हें किस तरह हो गए कि तुमसे जुदा होके हम तबाह हो गए तेरी आँखों का साहिल मैं तेरे दिल के ही काबिल तू मुसाफिर मैं तेरी मंजिल इश्क का दरिया है बहता डूब जा तुझसे है कहता आ मेरी बाहों में आके शराबी क्या शराबी दिल में जिसके रोया लुट गया समझो शराबी पास जिसके हम न हो साथी 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 पास रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी ओ साथी 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 पास रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी हाँ टैलेंट पे टैलेंट, टैलेंट पे टैलेंट, टैलेंट पे टैलेंट, और हाँ यहाँ टैलेंट ही मिलेगा because this is Xavier Youth Fest 2022. That was eye-popping performances, guys. You really rocked the stage. So may we now request Ishan Mukherjee, student of BAJMC, to propose the word of thanks.
Ladies and gentlemen, there is a short announcement. The results for today's competition will be announced tomorrow, that is on 14th of February. On the second day of XEST, the result will be announced tomorrow. Thank you. Gratitude is not only the greatest of virtues, but also the parent of all others. On behalf of St. Xavier's College of Management Technology, I, Ishan Mukherjee of BAJMC first year, feel privileged to propose the vote of thanks today. We extend our heartfelt gratitude to our acting rector and vice principal, Father Dr. Martin Porras SJ, our principal, Father Dr. T. Nishant SJ, members of the management and other dignitaries for gracing the occasion and making the first day of XEST 2022 a great success. We also acknowledge the members of Department of Journalism and Mass Communication for photography and videography. A sincere thanks to our professors. Indeed, we have been fortunate enough to be guided by them. We extend our deep sense of appreciation for the contributions made by the technical and support staff to ensure the smooth flow of this program. A special thanks to the anchors of the day, Vikas and Sangamitra, for comparing this program efficiently. A thanks is also due to the participants for their meticulous performances. At last but not the least, we thank all of you present here for being such a wonderful audience. Thank you. Jai Xavier's, Jai Bharat. An announcement for faculty members. Please meet after 15 minutes in the conference hall. We'll have a short meeting. Faculty members, please gather at conference hall after 15 minutes.